So we are starting this offline as well as online class of economics optional. The offline class we are starting after a gap of around 1.5 years. Although online classes चल रही थी, but offline class we are starting after a gap of around 1.5 years. So in the initial part, I will be basically discussing the course content, the strategy of economics optional for UPSC mains, and how we will be conducting the classes, what are the features of the class, from where to study, that means the source of economics optional paper 1 as well as paper 2, and what will be the test series schedule. So everything will be discussed in the, I will be taking around a half an hour, or you can say 45 minutes to explain the strategy. That means basically we are explaining the what will be the orientation. So whatever I am writing, just I request all to write everything in your notebook. So starting with the content part first. Starting with the content part first. So the optional, as you know, is divided into two paper. So paper 1, within paper 1 there are 5 parts. One part will be advanced micro, second part is advanced macroeconomics, third section is money, banking and finance, banking and finance, fourth is international economics, and fifth part will be growth and development. So you can say paper 1, there are 5 different section. Micro related question will be there, macro related question will be there, money, banking and finance related, international economics, as well as growth and development section. This within this micro there are 4 parts. One is a Marshallian and Wallacian approach of price determination, second is distribution theories, alternative distribution theories, third is market structure, and the fourth one is welfare. So here I will be just highlighting an important aspect regarding the syllabus. You have to note that there are some part of the syllabus which is obviously explicitly mentioned, that you have to read Marshallian and Wallacian analysis, you have to read market structure, you have to read welfare economics, but the syllabus is not specifically mentioning that you have to read production and cost also in the micro. You have to read consumer theory as well, you have to read market failure as well. So there are certain unmentioned part, unwritten part of that syllabus. So just remember, one part of the syllabus you are able to see, but there will be questions outside that part as well. और वो कहाँ से रेफर करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपको रेफर यूज करने हैं. Obviously that will be, we will be interpreting the questions of the past year, and based upon that we will be extending the syllabus as well for the content as well. So that means when you see the syllabus in microeconomics is basically containing Marshallian and Wallacian approach, distribution theories, market structure and welfare criteria. Just only 4 parts. Nowhere it is mentioning that consumer theory you have to read, production and cost you have to read, market failure you have to read, input market you have to read, but we will be covering all. We will be basically covering all, and for that purpose we have basically separated all the questions, topic wise questions. For example, when we start with within micro, when we start with market structure, then within market structure obviously we have to deal with the product market mainly, but there can be questions related to the input market, there can be questions related to the market failure. So all questions are clubbed here. So a topic wise detailed question list is separated and uploaded on site. That means what are the various questions asked from
market structure topic. So if you see that topic wise question list, you will be able to analyze. One thing is that what is the weightage of that section. So if you see question of 2020, you find question number 1, question number 2 and question number 3. There were 3 questions from market structure, but all 3 were surprisingly only from the oligopoly topic. You read market structure including perfect competition, monopoly, monopolistic, oligopoly, but the question was only from oligopoly part. You can say this was disproportionate, this is not a norm. Generally the question is basically well represented in the sense, for example, in 2019 one question was from perfect competition, other question was from monopoly, next question was from oligopoly, and next was from market failure. So we should be expecting question like this in 2019. So there were 4 questions. In 2018 again you find 4 or 5 parts. So generally 4 to 5 sub part will be there in micro from the market structure. So market structure weightage in microeconomics will be the, you can say it has a significant weightage. So most majority of question will be from the market structure. Similarly, when you read the welfare economics, all questions related to the welfare economics, distribution theories, all are basically separated. उस टॉपिक के क्वेश्चन को देखने से आइडिया लगता है कि उस टॉपिक में कहाँ तक आपको स्ट्रेच करना है, कितने क्वेश्चन बेसिकली आपको कवर करने हैं. सो द पर्पस इज बेसिकली दैट. So you don't have to buy previous year question or 10-year question. Everything is basically there, and it has been arranged in an organized manner. Then the second section in micro will be macroeconomics. In paper 1 is macroeconomics, but in macro also the syllabus is just specifying that you have to read classical economics, Keynesian economics, neoclassical, neo-Keynesian, without mentioning inflation and unemployment, without mentioning design of monetary policy. But there are many questions on Phillips curve, there are many questions on from Okun's law, design of monetary policy, inflation targeting, interest rate targeting. So we have to cover this macro section also in detail. Generally the weightage, although it is not written, but we find that from micro section you will be getting question of 90 to 100 marks. You can say 80 to 90 or in the range of 90 to 100 marks. From macro also 80 to 90. Sometimes it could be the other way around. Macro का weightage ज़्यादा हो गया, micro का weightage कम हो गया. International economics and growth and development. Usually the weightage is around 100 or 90 to 100. And weightage from money and banking is generally remaining in the sense maximum 30 to 40 approximately I am writing, so it is not well reprinted. You should not be that totaling that. What I am trying to say is that the once you know the question pattern, this overall weightage is according to the overall question asked. So in any paper, whether it is paper 1 or paper 2, the pattern of question remains same. So question paper pattern is that your question number 1, which will have 5 parts, 10 marks each, that will be compulsory. So first question will have 5 parts, and that question number 1 will be compulsory for you. So 50 marks question is compulsory, 5 parts is compulsory. Then question number 2 will have 3 parts. Generally the weightage is 20 plus 15 plus 15, so approximately. Question number 3 will also have 3 parts, A, B and C. Question number 4 as well, 3 parts, A, B and C. So first 4 question is section A. First 4 question is section A.
So you have to attempt, obviously compulsory question you have to attempt, and at least one question out of these three, at least one. Then question number 5 will again have 5 parts, and this first question in section B is again compulsory. So from question number 5 we start section B. Question paper का section B है. First question in that section will be compulsory. So 50 marks compulsory question here, 50 marks compulsory question here. Then question number 6 will have 3 parts. 7th question will have 3 part. 8th question will have 3 part. And again you have to attempt this compulsory question and at least one question. So 2 compulsory question and at least one question from each section. That means in totality you have attempted now 4, and now you are free to choose the 5th question from any section. So this instruction is very clear. You have to attempt at least one question from each section. So you have to attempt that, obviously that compulsory, and at least one question from each section. So for example, suppose you attempted question number 2 here and question number 7 here, then you are free to choose the last question from any section. And generally in section B you will find question related to international economics and growth and development. International and growth and development usually it is in section B, and micro and macro questions are generally in section A. Although rigidly follow नहीं होते, कभी कभी आपको एक्सेप्शनली मिल जाएंगे सेक्शन ए के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन और सेक्शन बी के अंदर माइक्रो का क्वेश्चन. सो इफ यू काउंट दी ऑल सब पार्ट्स, there are 28 question, 28 we can say parts in total. That means counting A, B, 5 question here, 5 question here and 3 question each here. So in totality there are 28 question, and you have to you are basically attempting 19 question out of that. 5 question here, 5 question here, 10 compulsory part and 3 question और करने, 3 into 3. So 19 question or 19 parts of the question you have to attempt in 3 hours. So that means for one answer you have less than 10 minutes. ठीक है, less than 10 minute का time है. So you have to be very accurate in writing that answer. There will be space constraint as well as there will be time constraint. So space constraint and time constraint both will be there. So it require a lot of practice. मतलब फाइनल पेपर में आंसर लिखने के लिए, इफेक्टिव आंसर लिखने के लिए, सो दैट यू कैन स्कोर मोर, इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. And for that practice I will be explaining in detail how we will be helping you and what you can do. But regarding the score, how much marks we can expect and what is the recent trend, ठीक है, अब 2020 के जो marks है वो भी available है. So we have a larger pool of data and we can help you to frame basically a realistic goal, that is what you should be aiming. Now in paper 1 the approach of paper 1 is more objective in nature, so there is greater objectivity and it require a lot of, we can say, technical answer as well. Technical in the sense you have to write as it has been explained in the core book. So for example, suppose question is on Bain's limit price. So as Bain has defined the limit price, you have to explain as it is, don't change the words. If the question is on classical dichotomy, money is neutral in the classical model, simple state question, then you have to explain as it has been explained in the Freud. So you are expected to basically reproduce that language, reproduce that statement, reproduce that keywords and reproduce those sentences. But you can reproduce those sentences in your answer only when you have practiced a lot, only if you have written it at least, I will say, 2 or 3 times. Without that it will be very difficult. So that will be covered as a part of your test series, that will be covered as a part of your daily answer writing practice. So what the nature of class will be, that in every class I will be suggesting you to answer few questions, at least 2 questions every day. That means based upon this class, that is say first class itself,
I will be saying these two questions you can attempt. All those questions are there in your portal, and all topic wise question has been provided. So like market structure, welfare, macro, international growth and development, even in paper 2. So choose two question every day, try to answer two question every day. So over a period of time, let us say 4 months, 5 months, you will have a larger pool of questions, and those questions you have attempted, those questions you have written, and these questions are in addition to your test series. ये इसके टेस्ट सीरीज के अलावा होंगे. टेस्ट सीरीज, the obviously the test series is part of the course. Now in the test series there are 12 tests, and in every test the pattern will be same, that means 28 question. So 12 test into 28, so 336 number of question वो एक टेस्ट सीरीज के पार्ट होंगे, and will be getting model answer of majority of question, as well as there will be discussion video as well. So that means I will be explaining how to write exactly. ठीक है, you have to write it, but for reference that what should be an ideal answer. So model answer will be provided to you for the test series, and we will be discussing questions as well. So discussion video will also be there, apart from obviously the evaluation of paper, and you can have one-to-one discussion as well. Once you get your answer sheet, you can call. I will be having your evaluated answer sheet with me, then you can discuss one-to-one as well, that what will be your specific requirement, what will be your specific need. So that one-to-one discussion is also possible. That means everything, remember, when you answer the test series, you have to download your question paper or answer sheet, and after writing that answer you have to scan it and upload it in your own portal. So it will be evaluated on portal, and it will be the evaluated answer sheet you will be getting on the portal, and it will also be sent on your mail as well. So this is basically the question paper pattern for paper 1. The pattern for paper 2 is also same. That means in paper 2 also there will be 8 question in total, divided into 2 section, and question number 1 and question number 5 will be compulsory. Now some students say how much we can score, or what should be the realistic target in paper 1. My firm belief is that even if the paper is very difficult, like the question of 2020, the question paper of 2013, so there are certain years in which the question paper, we also find that this question paper is difficult. So even when the question paper is quite difficult, in that scenario also you can expect that question of 150 marks at least will be straight and doable. ये ओवरऑल जो क्वेश्चन का पैटर्न है, 8 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 50 मार्क्स के हो रहे हैं, मतलब 400 मार्क्स का क्वेश्चन स्ट्रक्चर होता है. आउट ऑफ दैट 400 यू अटेम्प्ट 250. सो 800 का पेपर पैटर्न है, उसमें आप 250 अटेम्प्ट कर रहे हैं. और ये जो ब्रेकेज मैंने लिख रखा माइक्रो मैक्रो का, वो 400 के लिए है, नॉट फॉर 250. ठीक है, तो पेपर का स्ट्रक्चर होगा वो 400 का होगा. आप 250 मार्क्स का मतलब यू आर अटेम्प्टिंग 5 क्वेश्चन, बट द पेपर इज बेसिकली ऑफ 8 क्वेश्चन. Out of these various, we can say 28 parts, 150 marks question will be easy और direct, या फिर ऐसा हो सकता है जो आपने लिख रखा हो उसको पहले से टेस्ट में लिखा है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में लिखा है, अदरवाइज प्रैक्टिस कर रखा है. तो 150 मार्क्स मतलब आउट ऑफ 400 मैं कह रहा हूँ 150, उतने मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो हमेशा आपको ईजी लगेंगे, मतलब आपने उसको प्रैक्टिस किया हुआ है. सो अगर वो प्रैक्टिस्ड है और वहाँ पे एग्जैक्टली आप आंसर लिख लेते हैं, तो आउट ऑफ दैट 150 यू कैन स्कोर 2/3. 2/3 अगर स्कोर करते हैं, इट इज़ कंसिडर वेरी गुड स्कोर इन एनी ऑप्शन इन फैक्ट. बट आउट ऑफ दैट 150 यू कैन स्कोर 100. जो रिमेनिंग 100 क्वेश्चन है जो डिफ़िकल्ट हो गए, जो आपने प्रैक्टिस नहीं किए हुए थे, इफ़ यू जस्ट मैनेज मीन्स अराउंड 35-40,
passing marks. So if in the remaining 100 you can score 40 around, then the total will be of 140, and 140 is considered as very good score nowadays, given that no one is scoring, let us say, exceeding 300. In 2018 there were 4 or 5 students from here only, their score was in excess of 300, but last 2 years the score is not in excess of the 300. 285, 290, 275 is considered as very good score last 2 years at least, we can say. It could be, the trend could be different, but I am updating you what is happening today, what has happened in 2020 paper. So but even if the paper is difficult, even if the marking is stiff, you can manage, I will say, 140 at least, even when the difficult. Now if it is easy and if you get more expected questions, then your score can be more, obviously. So you can exceed that 150, or you can approach 160, 170 for paper 1. But if you secure at least 140 in paper 1 and maintain same in paper 2, then a score of 280 is very good, given that the top rankers are also scoring in that range. Okay, I will be sharing with you some detail of this year result. You can see the marks of the student of the previous year 2018-19, वो सारे इंफॉर्मेशन साइट के ऊपर अवेलेबल है. बट 2020 का जो रिजल्ट है इसमें 285 marks in optional, rank is 167, 270, 222, 270 marks, 247, 230. You can say 250 से नीचे ये कंसेप्ट होता था कि 250 से नीचे अगर कोई ऑप्शन में स्कोर कर रहा है तो ऑप्शन की वजह से ही वो स्टूडेंट बाहर हो जाएगा. बट दैट इज़ नॉट द केस. मतलब जितने भी इस तरीके के मेथ हैं वो सारे ब्रेक हो रहे हैं. यू कैन फाइंड मेनी एग्जाम्पल. ठीक है, हर तरह के एग्जाम्पल आपको यूपीएससी के रिजल्ट के अंदर मिल जाएंगे. 230 इवन 225 ऑप्शनल में स्कोर करके भी स्टूडेंट फाइनल लिस्ट में मैनेज करते हैं. तो आप ऑप्शनल से रिलेटेड अगर आप, मतलब ये दिमाग में नहीं बिठाना है कि अगर मैंने 270 स्कोर नहीं किया, 250 स्कोर नहीं किया तो मेरा फाइनल सिलेक्शन कभी पॉसिबल ही नहीं. रिमेंबर 225 पे भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है और 270 280 स्कोर करके भी स्टूडेंट के सिलेक्शन नहीं होते. मतलब ये जो लिस्ट में याद दे रहा हूँ उसमें one student, you can find that list here. We need the score 269. His score in paper 2 was, I think, highest 158, but not selected finally. Nikhil scored 263 and we can say 2 consecutive interview, but not selected finally. So it is not guaranteed that if you are scoring 217 optional you will be selected, and if you are scoring only 225 you will not be selected. So there are various examples. So but the overall trend is that the score in excess of 260 is, you can say, it is a fairly good score. 2020 के basis पे at least ये कह रहे हैं. The trend of 2021 could be different, but last year के जो trend है उसके basis पे कह रहा हूँ. 2018 के मार्क्स के अलग ट्रेंड थे, उसमें 290 प्लस वाले बहुत सारे स्टूडेंट थे, 300 प्लस के भी स्टूडेंट्स थे. इवन इन दिस ईयर द स्टूडेंट हु स्कोर्ड रैंक 4 विथ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, I got the information that his score in paper 1 is only 130. So by scoring only 130 also you can secure a rank of 4, that means top 10 के अंदर है. So that basically reflect that the in paper 1 the marking was difficult. ठीक है, वो एक reflection है. So these are examples. So you have to be aware of that marking scheme, and from my side I will say that a target of 280 plus is a realistic target. Don't set an unrealistic target like you will score in 350 375. ठीक है, वो 280 का जो स्कोर है, 260 प्लस भी वैसे बेटर स्कोर है, बट यू शुड बी एमिंग अराउंड 280 to 300 मार्क्स.
ये उस सिचुएशन के लिए जब पेपर डिफिकल्ट है. अगर इजी मिल गया, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन मिल गया, ये ऑब्वियसली you can score more than 300. Clear? So that is one part. Now the second part is that we have to discuss in this orientation is what will be the sources for micro, for macro, for money and banking, international economics, growth and development. Now those sources are in fact mentioned in your test series schedule. So test series schedule is basically, you can find that schedule online. So test started just yesterday, 17th of October, and the syllabus of each test is there. So in test number 1, micro include only market structure, and syllabus is monopolistic, duopoly and oligopoly. For this topic you have to read chapter 5, 6, 7, 8, 9, 10 and chapter 13 from Kotsanis. Chapter number 5 to 10 and chapter number 13 from Kotsanis. You don't need to buy that book. These chapters are provided to you in the study material in the form of Xerox. So you don't need to read entire Kotsanis. You are reading a few selected chapters. Compilation of those chapters are basically compilation of those chapters from various books are basically included in your study material. In the first test, macro include classical and ISLM topic. For classical model, chapter 3 and 4 Freund, and for Keynesian model, chapter 3, 4, 5 and 7 Dornbusch and Fisher. So for each topic there is a, you can say there is a specialized book, and in that book there will be specialized chapters. उस चैप्टर का जो कंपाइलेशन है वो आपका स्टडी मटेरियल होगा. And this for test number 1, for test number 2, 3, 4, 5 till 12, all topic wise has been provided. So what will be the source of studying any topic is mentioned there. And again I repeat, you don't need to buy those different sources. ठीक है, वो आपको स्टडी मटेरियल के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं. You need to keep, I think दो स्टडी मटेरियल में नहीं है. One is international, for international economics, Salvatore, usually almost all students have, and second is in the growth and development section ML Jingen. तो ये दो बुक आप बाई कर सकते हैं. जिस बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम्प्लीटली एमएल जिंगन से नहीं पढ़ना. जो एमएल जिंगन से कवर हो रहा है वो वहाँ एमएल जिंगन से करेंगे. जो एमएल जिंगन में कवर नहीं हो रहा, लाइक रोमर मॉडल के बहुत सारे क्वेश्चन अब रिसेंटली आ रहे हैं, तो जो सेक्शन वहाँ से कवर नहीं हो रहा, फॉर दैट पर्पस स्टडी मटेरियल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, विच विल कंटेन वेरियस सोर्सेज लाइक जोन्स चैप्टर 4 and 5, then few chapters from Devraj Ray, few chapters from Mankiw, specifically for the solar model. So study material plus those books, that will be your entire source. Now, many of you will be having अचल ahoja, तो आप स्पेसिफिकली मैंने अचल ahoja कहीं यूज़ नहीं किया, बट ये नहीं कह रहा कि वो आपको नहीं रेफ़र करना है. बट अचल ahoja इज़, जब आप एच एल ahoja भी पढ़ रहे हैं तो रिमेंबर उसके अंदर भी जो कंसेप्ट होगा वो कोटसानिस से ही बोरोड है. मतलब कोटसानिस में आप कह सकते हैं कि वो प्राइमरी सोर्स हो गया, एच एल ahoja उसी का सेकेंडरी सोर्स हो गया. सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट बी, देयर आर फ्यू टॉपिक्स नॉट स्पेसिफिकली मैंशनड क्लियरली इन एच एल ahoja, लाइक फॉर एग्जाम्पल चैम्बरलिन मॉडल. ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, but Kotsanis explained that Chamberlain model in model A, model B, model C very clearly, and Achal ahoja is not explaining that part very clearly. So for that purpose you should be reading Kotsanis. Plus Achal ahoja is very repetitive, a lot of time will be consumed, like it starts with the consumer theory, और कंज्यूमर थ्योरी के क्वेश्चन आप टॉपिक वाइज सारे देख सकते हैं. तो कंज्यूमर बिहेवियर के क्वेश्चन लास्ट 15-20 ईयर में एक भी नहीं है, या रेयरली अगर मिलेंगे तो एक दो क्वेश्चन बैकवर्ड बेंडिंग लेवल सप्लाई का वाले. बट स्टार्ट के जो कंटेंट होगा चला हो जाए उसमें 100 पेज 150 पेज वो सिर्फ कंज्यूमर थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो आई एम नॉट रूलिंग आउट दैट देयर विल बी नो क्वेश्चन इन फ्यूचर,
बट जो पास्ट पैटर्न है वो सजेस्ट करता है कि क्वेश्चन आपको इनफ डायरेक्शन मिल रहा है कि आप माइक्रो के अंदर क्या पढ़ो और आप कैसे पढ़ो उसे और कहाँ से पढ़ो। अगर मैं क्वेश्चनिस पढ़ रहा हूँ और उससे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन बन जा रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन बार बार वहीं से रिपीट होकर के आ रहा है, तो उसका मतलब दैट विल बी अ बेटर सोर्स। रिगार्डिंग क्लासिकल मॉडल, इफ आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम फ्रॉइन and students who are writing as it is from the front, they are scoring more, so I can say that this is the best source for that topic. So for each topic there is a preferred source, but obviously there are certain things which has been explained in the HL Ahoja better. So for that, like for example distribution theories, Kaldor distribution, and welfare economics, Pareto criteria, Kaldor-Hess criteria, तो वो सारे कंसेप्ट हैं। तो इफ़ यू आर हैविंग दैट एच एल हाउजा फॉर माइक्रो एंड मैक्रो ऑन, देन नो प्रॉब्लम विद दैट, बट दैट एच एल हाउजा इज helping in micro and macro, not for other. That is international, you have to read different source. Growth and development, you have to read different source. In international economics, since the weightage is around 100 marks, there will be two sources. In fact, international economics is divided into two parts. One is theories of trade, and the other is balance of payment and foreign exchange market. For theories of trade, the preferred source should be Paul Krugman, and for international economics, you should be reading Salvatore. So I will just mention that. In international economics, one part is theories of trade, and other is balance of payment and foreign exchange market. So for that first topic, that is theories of trade, Paul Krugman, because recent year question basically suggests that the paper is being set from that source, like inter-industry trade, inter-industry trade, new trade theories, better explained in that book as compared to Salvatore. But balance of payment and foreign exchange market, for that purpose Salvatore. Although अगर completely Salvatore से ही पढ़ते तो there is no major issue, but if you ask me what is better, then for theories of trade, I will say Paul Krugman, and BOP and foreign exchange market refers Salvatore. And few questions of 2020 लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वहाँ से कुछ आइडिया लगते हैं कि कुछ नए सोर्सेस की भी जरूरत है. लाइक वन क्वेश्चन, I will show that question first. This is a question paper of 2020. ठीक है, लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस विच आर वेरी प्रेडिक्टेबल, मतलब जिसके आंसर आपको पहले से मालूम होंगे, प्रैक्टिस कर रखा होगा. लाइक साइमल्टेनियस इक्विवेलेंट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर था. मेडल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, इसके वेल प्रिपेयर्ड आंसर होंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, but there was one new question in the form of distinguish between post-Keynesian approach to horizontalist and structuralist theory of endogenous money supply. Now ये question usually I think really कोई स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता है अगर उसने पहले से स्पेसिफिकली इसको नहीं पढ़ा हुआ. Now ये नए क्वेश्चन हो गए, इसके लिए यू हैव टू सर्च, दैट मीन्स इन एनी कन्वेंशनल बुक यू आर नॉट गेटिंग दिस टॉपिक. ठीक है, जो भी आप अवेलेबल सोर्सेज आप बता रहे हैं उसके अंदर नहीं होगा, बट वी so you have to search for that. So a specific PDF has been uploaded for this question separately. तो जैसे जैसे क्वेश्चन हमें मिलते जाते हैं, नए फॉर्म में मिलते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेबस को थोड़ा स्ट्रेच करते रहे. बट इट डज नॉट मीन कि यू शुड बी रीडिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग. हमारा अप्रोच वन ऑफ क्वेश्चन से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए.
टोटलिटी में 28 क्वेश्चन है, आउट ऑफ 28 2 और 3 क्वेश्चन नए मिलेंगे एंड यू विल बी गेटिंग दोज न्यू क्वेश्चन एवरी ईयर। जितने मर्जी आप कवर करके जाओ, 2 या 3 क्वेश्चन आपको वहाँ पे नए मिल जाएंगे। एंड अगेन आई रिपीट, 2-3 क्वेश्चन नए मिलने से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, इवन इफ दे कम इन द कंपल्सरी में अगर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, 4 प्रेडिक्टेबल थे तो 4 आप इजीली ले सकते थे, दोनों सेक्शन में एक क्वेश्चन हो गए, तो यू कैन से 20 मार्क्स के क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, तो वो मैंने 100 मार्क्स जो मैंने कहा डिफिकल्ट है उसके लिए रखा है, और वो मोस्ट डिफिकल्ट पेपर के लिए। बट जो 150 में 100 स्कोर करना है, मतलब जो टारगेट है वो आप अटेन कर सकते हैं। और ये नहीं कि दिस विल बी अ नॉर्म दैट इन एवरी ईयर यू विल बी गेटिंग दैट क्वेश्चन इन द कंपल्सरी सेक्शन। The question basically what I am trying to show is, this was question in section B. Explain how Keynesian speculative demand for money is restated in the regressive expectation model. A regressive expectation model. अब स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का कंसेप्ट ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया, बट ये क्वेश्चन अब इस कंटेक्स्ट में पूछा गया रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल के फॉर्म में एंड पॉइंट आउट द लिमिटेशन। You will find this regressive expectation model the first topic in chapter number 12 Branson, जो demand for money का concept है। That means that chapter is being referred, that book has been referred now, we can say introduced. So few more question may be asked from those sources, so you can add another source in the form of Branson, but again I say you don't need to buy that book। जो relevant chapter होंगे उसके जेरोक्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, वो साइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो साइट पे या मेल पे आपको नोट्स वाले सेक्शन के अंदर दिख जाएगा। तो ब्रैनसन के 2 चैप्टर, एक डिमांड फॉर मनी और एक कंजम्पशन, बिकॉज कंजम्पशन के भी क्वेश्चन अभी तक नहीं दिखते, लाइक लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, इंटरटेम्पोरल हाइपोथेसिस, रैंडम वॉक। So if you are expecting that you will be able to solve some new question, then you have to read some new topic as well, ठीक है। अगर आपको ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपसे नए क्वेश्चन बनेंगे, तो नए क्वेश्चन तभी बन सकते हैं जब आपने कुछ नया टॉपिक पढ़े। अब नया टॉपिक कितने पढ़ने हैं वो एक क्रिटिकल हो जाता है, बिकॉज हाउ मच टाइम यू विल कैन डिवोट एंड व्हाट विल बी द रिटर्न। हो सकता है आप नए टॉपिक बहुत सारे पढ़ो और उसमें से ना भी आए कोई, सो दैट डिसीजन यू हैव टू टेक। बट जो रेलिवेंट लग रहा है, जो मेरे अकॉर्डिंगली हो सकता है या प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर से कुछ क्वेश्चन में ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूडेड होंगे, तो वहाँ से आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो एक्चुअली इन टेस्ट सीरीज व्हाट आई विल बी डूइंग इज दैट, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो तो ठीक है 28 क्वेश्चन, बिकॉज वी विल ऑल्सो हैव अ लिमिटेशन कि आप कितने क्वेश्चन नए डालें वहाँ पे। सपोज फॉर एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन मैंने 28 नए डाल दिए, आप एज अ स्टूडेंट उसको अपेयर करोगे, बोलोगे मुझे तो कुछ आता ही नहीं, ठीक है, तो वो डिप्रेसिंग हो जाएगा। फिर सारे नए क्वेश्चन अगर मिल जाएंगे वहाँ पे तो, और सारे अगर प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन ही डाल दिए, फिर आप कहोगे सारे तो प्रीवियस ईयर में के अंदर आ ही रखा था, इसमें नया क्या है, फिर नए क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। सो यू हैव टू मेक अ बैलेंस, कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और कितने नए क्वेश्चन हैं। सो व्हाट आई विल बी डूइंग फ्रॉम दिस टेस्ट सीरीज दैट, जो 28 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 8 इंक्लूडिंग पार्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट इन दैट एवरी टेस्ट सीरीज सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन विल ऑल्सो बी गिवन, ठीक है, वो टेस्ट का पार्ट नहीं होगा बट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सो दोज हु वांट टू रीड मोर, दोज हु वांट टू राइट मोर आंसर, दे कैन अटेम्प्ट, बट दैट विल नॉट बी ए पार्ट ऑफ द सीरीज, बट वो ईच टेस्ट के नीचे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के फॉर्म में होंगे जो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व सम न्यू क्वेश्चंस, देन यू हैव टू अटेम्प्ट दोज न्यू क्वेश्चन एज वेल। क्लियर? सो दैट इज ऑल रिगार्डिंग द source. In the growth and development I mentioned, growth and development you have to keep ML Jingan plus your study material. So this was all about paper 1. Now briefly I will be explaining the approach of paper 2,
द अप्रोच ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 के अंदर स्कोर में काफ़ी वेरिएशन होता है, और जहाँ वेरिएशन ज़्यादा है वहाँ पे रिस्क का एलिमेंट भी ज़्यादा हो गया। तो वेरिएशन अगर ग्रेटर है, इन द सेंस वेरिएशन ग्रेटर मीन्स you are, some students are scoring 160 also, 155 also, and some students are scoring less than 100 also, so there is a greater range. So in paper 1 अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया और आपने प्रैक्टिस कर रखा है, देन यू हैव अ पोटेंशियल टू स्कोर 160 170 ऑल्सो, और कभी कभी ओनली 60 और 70 भी हो जाते हैं, ठीक है। और वो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके साथ ही हो रहा है, जो पढ़ के गए उनके साथ भी हो सकता है ये। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन पेपर 1। इतना ज़्यादा वेरिएशन पेपर 2 के मार्क्स में नहीं होता। पेपर 2 के मार्क्स में अगर आप बहुत ज़्यादा बेटर आंसर लिख रहे हैं, ऑल्दो कुछ स्टूडेंट स्कोर करते हैं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द मेजॉरिटी, 130 प्लस माइनस आई विल से 10 मार्क्स एट द मैक्सिमम, 7 to 8 मार्क्स ज़्यादा, दैट मीन्स 120 से लेके 140 के बीच, मतलब अगर नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो भी 120 के आसपास स्कोर कर लोगे, और बहुत अगर एफर्ट किया, बहुत अच्छा अगर पेपर लिख लिया तो भी 140 के आसपास जा रहे हैं। एक दो एक्सेप्शन होंगे जिनका 150 प्लस होगा, बट मेजॉरिटी की बात मैं कह रहा हूँ। तो वहाँ वेरिएशन कम है, मतलब रिस्क का एलिमेंट कम है, बट पेपर 1 में रिस्क का एलिमेंट ज़्यादा है। यहाँ पे लेस देन 100 होने की भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, बट अगर आपने प्रॉपरली उसको पढ़ रखा है, प्रैक्टिस कर रखा है, तो प्रोबेबिलिटी नहीं है फिर। बट अदरवाइज अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखा है, जस्ट आप यू नो दैट, अच्छा आई नो द कंसेप्ट ऑफ क्राउडिंग आउट, आई विल बी एबल टू राइट दैट आंसर इन द एग्जामिनेशन हॉल, वहाँ डिफिकल्टी है। यू रिक्वायर एग्जैक्टनेस देयर। अब इंटरसेट टारगेटिंग टेलर रूल के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करना है, तो जब तक वो टेलर रूल आपको पता नहीं है तब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वहाँ एग्जैक्टनेस रिक्वायर्ड है। पेपर 2 के अंदर थोड़ा बहुत आइडिया, थोड़ा बहुत हेल्प जीएस पेपर 3 से भी मिल जाता है, तो वो भी थोड़ा हेल्प करता है। सो पेपर 1 इज अप्रोच इज ऑल अबाउट दिस, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। पेपर 1 के ही लेक्चर आपको यहाँ भी ज़्यादा मिलेंगे, विल बी स्टार्टिंग विथ पेपर 1 क्योंकि वो ज़्यादा क्रिटिकल है, एंड आई थिंक स्टूडेंट रिक्वायर मोर असिस्टेंस इन पेपर 1 एज कम्पेयर टू पेपर 2। पेपर 1 के अंदर आपको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, पेपर 1 के अंदर ज़्यादा इलेबोरेशन है, ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर होने की ज़रूरत है। सो पेपर 1 अप्रोच इज दैट। नाउ explain paper 2. Paper 2 is all about Indian economy, and the syllabus is dividing it into 3 parts. One is pre-independence era, so it is economic history. Other is pre-reform period or pre-liberalization period, so pre-1991, and third is post-reform, so it is since economic reform. So after 91, this is before 91 and this is before 1947. So syllabus साइट के ऊपर जो अवेलेबल है वो इस फॉर्मेट में है, just see that. Paper 2, Indian economy in the pre-independence period, certain topics has been mentioned. Then Indian economy after independence, and that after independence is divided into 2 parts, pre-liberalization period and the post-liberalization period. But I have divided this paper 2 into 10 different parts. ठीक है, I think that is better approach. And your approach in paper 2 should be studying more sectoral, sector specific पढ़ने हैं. For example, you choose industry as a sector, तो इंडस्ट्री एज अ सेक्टर चूज किया तो उसके अंदर जितने क्वेश्चन है वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और वो प्री लेवलाइजेशन और पोस्ट लेवलाइजेशन दोनों एक कंटिन्यूटी में पढ़िएगा, सो दैट विल बी अ बेटर अप्रोच. सो पेपर 2 आई हैव डिवाइडेड बेसिकली इनटू 10 डिफरेंट पार्ट्स, एंड you can write if you want what are the 10 different parts.
Starting with one part will be obviously this pre-independence economic history. Regarding economic history, I will say that that is pre-independence. Recently, last 2-3 years, or you can say 3-4 years now, वेटेज प्री इंडिपेंडेंस वाले सेक्शन का ज़्यादा है, मतलब 3-4-5 क्वेश्चन तक वहाँ प्री इंडिपेंडेंस से आ रहे हैं, और वो स्टैटिक पार्ट हो गया. मतलब एक ये भी परसेप्शन होता है कि पेपर 2 तो मोर डायनेमिक है, इसमें करंट वाले क्वेश्चन होंगे सारे. इट इज़ नॉट लाइक दैट. अगेन इन पेपर 2 रिमेंबर देयर विल बी इन टोटालिटी 28 पार्ट्स. तो अगर 28 पार्ट्स है वहाँ पे, तो उस 28 पार्ट्स का ब्रेकअप देखना है कितने क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड होंगे. तो प्री इंडिपेंडेंस का जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक है. दैट मीन्स आप इसको पहले से प्रिपेयर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है. ड्रेन थ्योरी के क्वेश्चन कई बार हैं, रेलवेज का क्वेश्चन है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है. सो देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं. तो प्री इंडिपेंडेंस के जितने भी क्वेश्चन है वो सेपरेट किए गए. ये टॉपिक वाइज में आपको साइट पे ऊपर मिल जाएगा. एनालाइज द, लाइक 2020 का क्वेश्चन है, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 18th century, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग 1857 to 1947, examine the currency policy of the British. So you will find 1 question, 2, 3, 4, 5 question from the pre-independence period. कुछ क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे, कुछ 15-20 के, अराउंड 60-75 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. तो 1 and in 2019 also you will find 1, 2, 3, 4, 5. So generally 5 parts, 4 to 5 parts are from pre-independence period. For this pre-independence era Indian economy, one source is SSM देसाई. ठीक है, हिमालय पब्लिकेशन की एक बुक है SSM देसाई. वो हैंडी बुक है, इजी बुक है, यू कैन रीड. देयर आर मेनी चैप्टर्स जो रेलिवेंट टॉपिक है. मतलब देखिए, अप्रोच ये होगा कि आप पहले इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी प्री इंडिपेंडेंस कर रहे हैं, तो इसके आप टॉपिक एक जगह लिस्ट कर लेंगे. लाइक कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, रेलवे हो गया, ड्रेन थ्योरी हो गया, वैसे लिस्टिंग कर लीजिए. और उस लिस्टिंग को करने से पहले ये क्वेश्चन देख लेना. ये आपको हेल्प करेगा लिस्टिंग करने के लिए कि कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं. एंड आफ्टर लिस्टिंग दोज टॉपिक्स, ईच टॉपिक पे आपके पास एक वेल प्रिपेयर्ड राइटअप होगा. मतलब 200 वर्ड्स अराउंड, 200-250 वर्ड्स अराउंड, वेल प्रिपेयर्ड राइटअप. मतलब बुक से देख करके वो डायरेक्टली लिखना है अपने नोटबुक में, सिर्फ अंडरलाइन करके छोड़ना नहीं है. ठीक है, उसको आप अपने नोटबुक में पहले लिख लेंगे. मतलब वो इन एडिशन टू, मतलब क्लास के अंदर भी वो सारे होंगे, बट अगर आप अपनी ओन स्टडी बना रहे हैं तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ. उसे एक्सप्लेन करने, मतलब उसे राइटअप के फॉर्म में पहले उसको रेडी कर लेना है. तो एक सोर्स आपका SSM देसाई की बुक हो गई. इसका जेरोक्स कॉपी, स्कैन कॉपी वैसे अवेलेबल है, मतलब साइट के ऊपर अवेलेबल है, वो मिल जाएगा आपको. जीके कोर्स में नोट्स वाले सेक्शन के अंदर होगा. तीर्थंकर रॉय की बुक भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसके भी कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो स्टडी मटेरियल में इंक्लूड कर दिया गया है. इरफान हबीब के कुछ चैप्टर होंगे वो इंक्लूडेड हैं, और अदर सोर्सेज हैं. तो यू विल बी गेटिंग वन स्पायरल एज वेल. उसमें अलग अलग जो सोर्सेज होंगे वो कंपाइल्ड है. सो दिस विल बी योर फर्स्ट टॉपिक. आफ्टर दैट जो प्री और पोस्ट रिफॉर्म है, इसको प्री और पोस्ट रिफॉर्म में ना करके आप उसको सेक्टर स्पेसिफिक कर लीजिए. सेक्टर स्पेसिफिक का मतलब हो गया टेक वन सेक्टर एज एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर को टोटलिटी में पढ़ना है, प्री और पोस्ट रिफॉर्म मिला करके. तो आप एग्रीकल्चर लिया तो फ्रॉम इन एग्रीकल्चर व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स, लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर ग्रोथ, देन एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, recent agriculture laws, what are the controversy, you have to be very specific in that. तो पहले वो लिस्टिंग करना, और लिस्ट करने के लिए अगेन जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उसको पहले देखना है कि एग्रीकल्चर से कितने क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से सेक्शन से वो क्वेश्चन है. 20 में यू फाइंड 3 क्वेश्चन, 19 में अगेन यू फाइंड 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन. सो 3 और 4, 5, 3 to 5 क्वेश्चन आर जनरली फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्शन. तो ये हेल्प करेगा कि आप एरिया स्पेसिफाई कर लेंगे. एंड फॉर दैट एरिया अगेन यू हैव टू प्रिपेयर योर राइटअप. एंड फॉर दैट पर्पस नाउ एग्रीकल्चर से रिलेटेड
जो स्टैटिक पार्ट है इंडियन इकोनॉमी में वो सोर्स के फॉर्म में यू कैन रेफर मिशनपुरी इंडियन इकोनॉमी, and EPW articles are included in उमा कापिला। इजी रीडिंग है तो मिशनपुरी वो आई थिंक आंसर फ्रेम करने में ज़्यादा हेल्प करेगा, और ज़्यादा एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन EPW के आर्टिकल्स में है, और वो एडिटेड फॉर्म है उमा कापिला के बुक में। इफ़ यू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग EPW आर्टिकल नाउ डेज ऑल्सो, बिकॉज वो थोड़ा वॉल्यूमिनस हो जाता है और एवरी वीक आपको 14-15 आर्टिकल मिल जाएंगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सेपरेट देम कि कौन सा रेलिवेंट है कौन सा रेलिवेंट नहीं है। और वो जो रेलिवेंट वन होता है वो फिर न्यूज़पेपर वगैरह में एडिटोरियल पेज के अंदर आ ही जाता है। सो इवन इफ़ यू आर नॉट रीडिंग EPW रेगुलरली, मैंने जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है उसको सेपरेट कर रखा है और वो स्टडी मटेरियल में इंक्लूडेड है। यू विल फाइंड द सेम थिंग इन उमा कापिला एज वेल। तो सोर्स में मेनली 2 बुक, and for recent part economic survey, जिस ईयर भी आप एग्जाम दे रहे हो उस ईयर का इकोनॉमिक सर्वे, और ज़्यादा से ज़्यादा उससे प्रीवियस ईयर का इकोनॉमिक सर्वे। तो एग्रीकल्चर किया, और एग्रीकल्चर में लाइक एग्रीकल्चर ग्रोथ या डेवलपमेंट है, यू विल फाइंड वेरी रेलिवेंट आर्टिकल बाय महेंद्र देव। तो ये एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड तो बहुत सारे आपको रिसेंट आर्टिकल मिल जाएंगे। तो मतलब वो सब कुछ आपको सप्लीमेंट करना होगा, दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा आपका भी एफर्ट होगा इन द सेंस कि रेगुलरली उसको अपडेट करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट, एक टॉपिक आपने लिया एग्रीकल्चर का बेसिक या डायनामिक, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने नोट कर लिया वहाँ पे, और जस्ट लीव 1 पेज ब्लैंक आफ्टर दैट, सो दैट व्हेन यू रीड एनी न्यूज़पेपर यू गेट न्यू इन्फॉर्मेशन, जस्ट राइट इट देयर, उस जगह ही लिखिएगा एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में, सो दैट पेपर से एग्जामिनेशन से पहले आपके पास सारे सोर्सेज एक जगह होंगे। सर्वे आएगा, सर्वे का डेटा अपडेट किया, उसको भी उसी जगह लिखा हमने। सो 1 टॉपिक विल बी एग्रीकल्चर, देन सेकेंड इज, थर्ड इज इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। सर्विसेज स्मॉल टॉपिक है, इसको यहाँ क्लब कर देंगे। तो यहाँ पे इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे जितने भी पार्ट्स होंगे, लाइक इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर, MSME, ये पहले टॉपिक कैटेगरी पहले बनानी है, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स है उसको बनाना है, फिर वो एक एक सब टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है उसका सोर्स है, और वो राइटअप के फॉर्म में रेडी होना चाहिए। ठीक है, वो आपका प्राइमरी वर्क होगा। मतलब जो 5-6 मंथ आप प्रिपेयर करते, मतलब 5 मंथ अराउंड अगर आप ऑप्शन पे डिवोट करते हैं, तो ये हमारा प्राइमरी वर्क होगा इन पेपर 1 एज वेल एज इन पेपर 2। वो इंटायर राइटअप प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए। क्लियर, वो एफर्ट आपको करना पड़ता है और किसी भी ऑप्शन में करना पड़ेगा। 4-5 महीने आपको लगाने हैं वो इन एनी ऑप्शन। सो इंडस्ट्री एंड सर्विस विल बी वन इम्पॉर्टेंट पार्ट, विल बी द एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ, उसका ट्रेंड एंड कंपोजिशन। सो मतलब इंटायर ग्रोथ का ट्रेंड from 1947 to 2021. Students should be very clear about that trend, that what was happening in the first 3 decades, 1950s, 60s, 70s. It was characterized by slow rate of growth, called as Hindu rate of growth, primarily determined by the growth rate of agriculture. Then from 1980 onwards there was a higher growth. So why there was higher growth after 1980? What was the change? So popularly we know that the cut-off year was 1991, but in here you will be studying that it was not 1991, but in fact it was 1980. So what was the change? After 1991 economic reform, how that growth momentum picked up further, but that momentum was lost after 97-98 till 2003-04. Then from 2004 to 2008-09 again we find a dream run, that is high rate of growth, and after that again slow down. और आज की डेट में अब उसका कोविड और उसका इम्पैक्ट, पैंडमिक और उसका इम्पैक्ट, तो वो 1947 से या इफेक्टिवली जब प्लानिंग पीरियड स्टार्ट करें 1951 से लेकर के 2021, उस एंटायर पीरियड को फेज वाइज आपको ग्रोथ और उसका कंपोजिशन क्लियर होना चाहिए
कि हाउ दैट ग्रोथ वाज डिटरमाइंड, व्हाट वर द मेजर फैक्टर ऑफ लेट अस से हाई ग्रोथ रेट और स्लो ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या था, सर्विस का कंट्रीब्यूशन क्या है और इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या है, एंड हाउ दे हैव चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. So this is an important part. I think a student should be starting with this part, growth of trend. Then you can read agriculture, industry and services. Then a fifth will be all questions related to public finance. All questions related to that public finance. So public finance will be including all tax policies, any question related to GST, questions related to the government expenditure, plus questions related to fiscal policy, questions related to फाइनेंस कमीशन, डिसेंट्रलाइजेशन, वो सारे पब्लिक फाइनेंस के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस द सिक्स्थ टॉपिक यू कैन क्लब ऑल प्रॉब्लम्स इन वन, लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, डेमोग्राफी को भी उसमें ऐड कर दिया, तो वो एक पर्टिकुलर सेक्शन बन जाएगा. एंड यू विल फाइंड दैट जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें से कोई एक रेगुलरली पूछे जाते हैं और कभी कभी काफ़ी स्पेसिफिक हो जाता है क्वेश्चन. लाइक पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट पे लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन, रंगराजन कमेटी और तेंदुलकर कमेटी ने पॉवर्टी के मेजरमेंट में जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट की थी उसमें क्या डिफरेंस था. अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो फिर वो बहुत एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायर करता है. पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, पॉपुलेशन. अभी 2019 का क्वेश्चन, हाउ इज द मेथडोलॉजी फॉलोड बाय रंगराजन कमेटी डिफरेंट फ्रॉम द तेंदुलकर कमेटी इन मेजरिंग पॉवर्टी. तो जब तक वो एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. एंड दिस वाज आई थिंक इन कंपल्सरी सेक्शन. तो इस फॉर्म के क्वेश्चन आपको, तो जितने भी टॉपिक हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको एक जगह क्लब कर दिया. सो दैट विल बी वन, poverty and unemployment. Then seventh is monetary management. तो monetary management में money और उससे related policy और RBI, monetary policy in fact you can say, money even this will include banking, questions related to NPAs, their problem, banking reform, recent banking reform. Then one major sector will be external. So external sector will be basically including questions related to composition and direction of foreign trade, export import policy, FDI, रोल ऑफ दैट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसका ट्रेंड. तो एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर जितने भी एस्पेक्ट रिलेटेड टू BOP और उससे रिलेटेड कंसेप्ट होंगे, लाइक कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के क्वेश्चन कई बार आ गए, तो वो सारे क्वेश्चन आप एक जगह क्लब कर देंगे. ये ऑलरेडी यहाँ पे कंबाइंड है, आपको अलग से एफर्ट नहीं करना है. एक्सटर्नल सेक्टर, BOP, एक्सचेंज रेट. ठीक है, टॉपिक वाइज करने का एक एडवांटेज होता है कि हर टॉपिक का आपको वेटेज पता चल जाता है कि इस टॉपिक्स को अगर आप पढ़ रहे हैं तो कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे अराउंड. सो 3 to 4 क्वेश्चन अगेन यू फाइंड फ्रॉम द एक्सटर्नल सेक्टर. इवेलुएट द रोल ऑफ FDI इन कंट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. अब ऐसे क्वेश्चन का आपके पास वेल प्रिपेयर्ड आंसर होगा. ठीक है, WTO, ट्रिप्स, WTO एंड इंडिया. सो क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट विल बी इंक्लूडेड इन द एक्सटर्नल सेक्टर. तो क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एफर्ट नहीं करना, सोर्स कहाँ पे पढ़ना है उसके रिलेटेड एफर्ट नहीं करना. देन वन पार्ट इज इन फैक्ट वी कैन सेपरेटली से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. तो ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट. और 10th में जितने भी करंट एस्पेक्ट है वो ले लेंगे. गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट एक्ट्स,
तो जितने भी करंट एस्पेक्ट हो गया वो ले लिया, मतलब आप इसे इस फॉर्मेट में स्ट्रक्चर करें तो ज़्यादा बेटर है। तो सिलेबस ने डिवाइड कर रखा है इसको 3 पार्ट में, और यहाँ क्लास के अंदर इसको 10 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एंड सोर्स इज ऑब्वियसली basic source will be for pre-independence SSM Desai, and for other part it is Mission Puri and Uma Kapila and EPW article, but don't forget to read your daily and newspaper, ठीक है, वहाँ से सप्लीमेंट करना, मतलब वैल्यू एडिशन है। पेपर 2 में अप्रोच ज़्यादा सब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल है कि सिमिलर आंसर लिखे थे आपने बट नंबर क्वाइट डिफरेंट आ गए, ठीक है, या दो कॉन्ट्ररी व्यू लिखा था बट फिर भी नंबर दोनों के आ गए। लैंग्वेज पे अगर जो बेटर कंट्रोल है, थोड़ा एक्सप्रेशन बेटर है, प्रेजेंटेशन ठीक है, तो पेपर 2 के अंदर स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत अगर कंटेंट कम है बट आप प्रेजेंटेशन से या लैंग्वेज से उसको बेटर आंसर लिख सकते हो वहाँ पे। और रिसेंट्स वाले मतलब इट ऑल डिपेंड अपॉन विच क्वेश्चन यू चूज़। इनफैक्ट अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन को चूज़ कर रहे हैं, टेक्निकल क्वेश्चन के अंदर भी हैं, वो अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो वो एस्पेक्ट पता होना चाहिए। बट जनरली यू कैन स्कोर मोर हेयर ऑल्सो, बट वेरिएशन रिस्क थोड़ा कम होता है यहाँ पे इस पेपर के अंदर। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे रिस्क कम है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं भी हैं तो भी बहुत ख़राब नंबर नहीं आएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो भी हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि इसके अंदर ज़्यादा नंबर आएगा। पेपर 1 में कह सकते हो, पेपर 1 में आप कह सकते हो कि अच्छा ऐसा हमने सारा लिख दिया है। अब लेटर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही लास्ट ईयर के 1 या 2 थे, अगर वो आपने बना लिखा है, प्रैक्टिस किया हुआ था, बन गए आपसे, तो ऑब्वियसली स्कोर ज़्यादा आ जाएगा। तो एग्जैक्टनेस ज़्यादा पेपर 1 के अंदर है, तो आई थिंक पेपर 2 की स्ट्रैटेजी रहेगी नंबर ऑफ लेक्चर्स इन पेपर 2 एज कम्पेयर टू पेपर 1 इज ऑब्वियसली लेस। इन पेपर 1 अगर अराउंड 85 to 90 लेक्चर लगते हैं जनरली, तो पेपर 2 30 to 40 लेक्चर के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो इन टोटलिटी करीब 120 से 130 120 to 130 लेक्चर विल बी देयर। The other important part is that this batch is today is 18th of October। ये क्लास आपकी अराउंड आई सेड 120 to 130 लेक्चर्स स्प्रेड ओवर 4 to 5 मंथ, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट इंटायर पेपर 1 विल कंप्लीट देन पेपर 2 विल स्टार्ट। पेपर 2 के लेक्चर इस बैच के अंदर साइमल्टेनियसली भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये 18 अक्टूबर से आप कह सकते हो कि इट विल गो टिल नवंबर, दिसंबर एंड देन टिल मार्च। बट दोज हु आर अपेयरिंग इन 22, ठीक है, जो 22 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए जनवरी 22 यहाँ तक आई थिंक ऑप्शनल रेडी हो जाना चाहिए उनका कंटेंट वाइज, सो दैट जनवरी से लेकर के जून उस पीरियड के अंदर आप प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो दोज आर बेसिकली अगर वन ऑफ क्लास है, एवरीडे क्लास करते जाओगे, वहाँ से जनवरी तक कोई इशू नहीं, बट जनवरी के बाद सम स्टूडेंट को ये फील हो सकता है कि अब उन्हें अभी ऑप्शनल ना पढ़ के कि प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करना है। सो विल ट्राई टू कवर एज मेनी क्लास एज पॉसिबल। और जिनका मेंस अभी है, मतलब 21 का, बिकॉज 21 के एग्ज़ाम डिलेड हुए हैं, 22 से तो शेड्यूल्ड है अपने, 21 का तो प्रीलिम्स लेट हुआ है बट उसका मेंस अब ड्यू है इन जनवरी। तो जिनको 21 मेंस के लिए क्लास करनी है वो बैच करें जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, जिसमें पेपर 1 की सारी क्लासेस अपलोड हो गई है, जो मई में स्टार्ट हुआ था 28 में, उसमें 90 ऑड लेक्चर्स पेपर 1 के अपलोड हो गए। तो वहाँ पे एक्सेस लेकर के वो उस क्लास को जल्दी कवर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वो डोंट हैव टाइम। बट इफ़ यू आर एमिंग फॉर 22 देन यू हैव 2 ऑप्शन नाउ। एक तो इस नए बैच के साथ अपनी क्लास करते जाओ, एवरीडे 1 लेक्चर अपलोड होता जाएगा और ये क्लास आप देखते जाओ। दूसरा, अगर आपको लगता है नहीं मुझे 2 महीने के अंदर ही कवर कर लेना है, 2.5 महीने में कवर कर लेना है, उसके बाद मैं ज़्यादा टाइम प्रीलिम्स पे फोकस करता हूँ, देन इन दैट सिचुएशन यू कैन टेक दैट कोर्स एज वेल, जो मई में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, दिस ईयर इटसेल्फ। तो बहुत ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है, जो डिफरेंसेस होंगे वो टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज़
इन बोथ केस विल बी गेटिंग द न्यू वन. आप ओल्ड बैच करो या न्यू बैच करो, दोनों ही सिचुएशन में आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा. क्लियर? So, and apart from this, some of you may also be preparing for Indian Economic Service. So, regarding the difference in approach for Indian Economic Service and IAS, I said in this 120 to 130 lecture will be there. But in Economic Service, around 200 lecture will be there. Out of that 200, this 120 to 130 lecture is common. That means for both the batch it will be same. But the remaining, you can say 80 or 90 lectures, which is mainly for General Economics 1, because Economic Service के अंदर फिर 4 पेपर है, General Economics 1, 2, 3 और Indian Economy, और plus General Studies and General English. This is including micro numerical. वो माइक्रो न्यूमेरिकल इधर ऑप्शन में उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड है. कंज्यूमर थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, प्लस इकोनोमेट्रिक्स, मैथ्स, स्टैट्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे. तो प्लस जनरल स्टडीज़ की भी क्लासेस आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए अवेलेबल कराई जाती है. तो ये 80 to 90 लेक्चर आपके स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर इकोनॉमिक सर्विस है. सो व्हेन यू क्लब दिस 80 and 90 विथ ऑप्शनल क्लासेस, देन योर कोर्स कंटेंट फॉर इकोनॉमिक सर्विस इज देयर. तो जो लेक्चर्स होते हैं ये 120 to 130 वो दोनों में कॉमन होते हैं. एग्जामिनेशन लेने वाली बॉडी भी सेम है. दोनों के क्वेश्चन अगर आप भी मतलब अगर ऑप्शनल दे रहे हैं तो आप भी इकोनॉमिक सर्विस वाले कुछ क्वेश्चन देखें तो ज़्यादा बेटर है. मतलब जो वो क्वेश्चन जो ऑप्शन में पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल वाली बात नहीं कर रहा कि आप उसके न्यूमेरिकल करो, और जो इकोनॉमिक सर्विस दे रहे हैं उनके लिए तो बेटर है ही कि वो ऑप्शन के सारे ही क्वेश्चन देखो. ठीक है, बट अप्रोच ऑब्वियसली डिफरेंट होता है. तो टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ डिफरेंट होगी. इकोनॉमिक सर्विस के लिए टेस्ट सीरीज डिफरेंट होगा और ऑप्शन के लिए टेस्ट सीरीज डिफरेंट होगा. ठीक है. So this is, I think, all about the course content and how to proceed, how to start, and from where to study. What will be the source? The key that I will be emphasizing again is your source must be very exact. Primary source होना चाहिए. From those primary source you must have a well prepared answer, well prepared content or write up. Practice those write up again and again. Only then you can learn it. Only then you can reproduce it in the test. Only then you can reproduce it in the final mains. So writing is key. Writing will be the key. पढ़ने से ज़्यादा लिखने का काम करना. लिखना ज़्यादा है. बार बार लिखेंगे तभी आप फाइनल एग्जाम में वैसे लिख पाओगे जैसे बुक में लिखा हुआ है. अगर ये परसेप्शन है कि ठीक है, आई नो द कंसेप्ट, नाउ आई विल बी एबल टू एक्सप्रेस एंड राइट इन द एग्जामिनेशन. There is a huge gap between your understanding and what you are writing, and they are not UPSC is not requiring answer in your language. They are requiring answer in the language in which it has been mentioned in the core book. ठीक है, तो उसको रेफर करते हुए लेक्चर होते हैं सारे. जो राइटअप होगा आपके पास वो राइटअप अराउंड मोर देन आई थिंक 1000 to 1500 पेजेस के डेली आंसर जो आप डेली का कंटेंट लिखेंगे वो हो जाएगा. तो इवन इफ यू आर नॉट रीडिंग स्टडी मटेरियल, यू आर जस्ट रिलाइंग ऑन दिस क्लास. सो क्लास को आपको इस फॉर्म में माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल सबके लिए सेपरेट स्पायरल मेंटेन करें. प्लस इन द टेस्ट सीरीज यू विल बी गेटिंग मॉडल आंसर. सो आई सेड इन वन टेस्ट देयर विल बी 336 क्वेश्चन. मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे. वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेगा, इकोनॉमिक सर्विस के भी कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी कवर होंगे, और अदर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होंगे. तो टेस्ट सीरीज़ के अंदर तो ये, बट सिंस वो टेस्ट सीरीज़ एनुअली हमारे लिस्ट पॉइंट पे ये प्रीलिम्स से पहले भी एक होता है, प्रीलिम्स के बाद भी होता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सारे टेस्ट, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं. सो वी हैव इनफैक्ट अ पूल ऑफ मोर नंबर ऑफ मॉडल आंसर. तो मॉडल आंसर आपको ज़्यादा प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑल्दो ऑब्वियसली टेस्ट के फॉर्मेट में यू विल बी गेटिंग दैट 12 टेस्ट, बट आई प्रॉमिस टू प्रोवाइड यू मोर आंसर. तो आई थिंक 500 से 700 क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाएंगे
हर क्वेश्चन अगर दो साइड में भी लिखे हुए हैं तो 1200 पेज का आपका वो मॉडल आंसर का एक सेपरेट स्पाइरल होगा. रीड दोज नोट्स अगेन एंड अगेन, बट अल्टीमेटली you have to write it and apply your concept as well, because some question require application, they are not directly there. It is not that वो notes पढ़ा, कुछ question मिलेंगे जो directly answer require करते हैं, but in some question you have to apply, you have to apply your concept, then only you can answer it. Clear? So I think that is enough for the orientation, and now we can start with the lecture. So orientation my concept, I think I have addressed all. If some more queries there, you can directly call me. If you have still more query, I think I have tried to address all, but if still you have any more query, you can call me directly on this number. So now we can start with the lecture. So starting with paper 1 first, when economics optional. Paper 1, and in paper 1 we are starting with micro, and within micro start with market structure. So paper 1 we are starting with micro, and in micro we are starting with a market structure. It is not that we will be completely covering micro first and then we will be moving to macro. In fact, it will be done in a block, like market structure topic will take around 10 to 11 lectures. Then we will move to macro, we will be cover the classical and Keynesian model first, and that will take another 10 to 11 lecture, and then again we will return back to micro covering the welfare and so on. So it will be basically in a lot of you can say 10 to 11 lecture, that topic will change. So start with the market structure, and before starting with the market structure, just see the question, because that will help basically to keep your focus on what is needed. So in the from the market structure topic last year, in fact there were 3 questions and all 3 were from oligopoly section. But in 2000, and out of that 3, 1 question was purely numerical, which was Cornett model. But that numerical question this numerical from Cornett model, lastly it was in 2009 and 2013. So you can say third time this numerical, same Cornett model numerical has been asked. So 1 question was basically numerical, but all 3 were basically from oligopoly section. In 2019 there were 5 questions were there, 4 questions in fact, but it was 1 question from perfect competition, another from monopoly, another from oligopoly, and another from market failure. So the topic of market structure usually gives you around, we can say safely 4 to 5 parts. So 4 to 5 parts from market structure. Reference for this market structure topic, reference book will be Kursianis. So chapter number 5 to chapter number 10 and chapter number 13. So few chapters from Kursianis. So I will be also referring to that, and this class is basically starting with the market structure. But before beginning, just consider that when we study the market structure, the concept of market in micro is product specific. So when I say it is product specific, it means we are not referring to a marketplace, rather we are basically referring to a market for a product. It could be market for pen, it could be market for visualizer, it could be market for camera, it could be market for chair, it could be market for spirals. So we are referring to market for one particular product here. Now if
in that market of one particular product, if we find only one seller, then we call that market as monopoly. If there will be two seller of that product, we call it duopoly. If there are more than one but not large in number, then it is oligopoly. If there are large number of sellers producing same good, then it is perfect competition. Large number of sellers producing differentiated product, then it will be monopolistic. So actually that classification of market is here based upon number of seller. So based upon number of seller, the market can be perfectly competitive if there are large number of seller producing homogeneous product. The market could be monopoly if it is characterized by presence of only one seller. It could be monopolistic in nature if there are large number of seller producing differentiated product, and it will be oligopoly in nature if there are few big sellers in the market. So broadly आप market structure को 4 parts में divide करें: perfect competition, monopoly, monopolistic and oligopoly. As far as question is concerned, you will find always greater weightage for oligopoly, then monopolistic, then monopoly, and then perfect competition, in that order. So your focus should be mainly it is monopolistic and oligopoly, but few questions are there from perfect competition and monopoly also, although it is not written in the syllabus. Syllabus only says monopolistic, duopoly, oligopoly. So just remember that the classification is based upon number of seller. Clear? Now before beginning any market form, one important part is that in any market form we have to take two important decisions. In fact, the firm has to take two important decisions. One, how much output it should produce and at what price it must be sold. How much output it should produce and at what price it will be sold. So output and price decision is the main. How much output to be produced and at what price it should be sold. Now in any form of market, firm will always produce that much of output where its own profit get maximized. So that is common. So first of all I will explain some basic point, and that basic will remain same in any form of market. So you will be writing some technical note or basic. So first for your first basic point will be what will be the profit maximizing condition, and that condition will remain same irrespective of any market. So start with the basic one, basic concept number 1. You can write it as a part of a technical note also. Remember, I assume that some of you may not have that economics background. So assuming that I will be starting with that basic, and few basic classes are also uploaded in the foundation course section. If you want, you can see those lectures as well. There will be no charge for that lecture. That means if you don't know elasticity of demand, production loss, cost loss, although in the regular batch also I will be taking care of that. That means I will be starting from the basic part. Like this first note is basically dealing with that. The output, firm will always produce that much of output where its own profit get maximized. Now as you know, when we want to calculate profit, then profit will be difference of revenue and cost. It will be difference of revenue and cost. And what is revenue? Just for example, suppose we want to calculate profit for our institute. So what will be the revenue? Revenue, we can say fees multiplied by number of student. Fees means price, number of student means quantity. So price into quantity is total revenue. Price into quantity. So price multiplied by quantity will be total revenue. From that total revenue you subtract total cost, and total cost has two parts mainly. One is fixed cost
And what is fixed cost? Fixed costs are those which do not depend upon quantity. That means even when quantity will be zero, there will be some fixed cost. Like for example, during the lockdown there was no classes here, but we have to bear that fixed cost in the form of rental. So rental is an example of your fixed cost. And what will be the variable cost? Variable depend upon quantity. So now we are conducting class, it means now it will vary as per the class, like the electricity charges and other expenses, those will be the variable cost. So total cost has two parts, one is fixed, other is variable. So profit is revenue minus cost. You can denote profit by pi symbol. So revenue minus cost, clear? We have to find profit maximizing output. That means how much output firm will produce in order to maximize its own profit. So when we maximize, we have to find profit maximizing quantity. So mathematically, जैसे टेक्निकल नोट में लिख रहा हूँ, दैट मीन्स एग्जामिनेशन में ऐसे यूज़ नहीं करना, जो लास्ट का कंडीशन आएगा वो सिर्फ आपको लर्न करना है. बट अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है और इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो मैथमेटिकली फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन ज़ीरो आना चाहिए and second differentiation must be negative. So you differentiate that function with respect to quantity because we want to find profit maximizing quantity. So you differentiate revenue with respect to quantity, you differentiate cost with respect to quantity and equate it to 0. When we differentiate, it means it is change in revenue due to change in quantity. जब आप dy by dx कर रहे हैं, it means what? It is change in y due to change in x. So it is differentiation of revenue with respect to quantity. It means change in revenue due to change in quantity. Now any change or any additional change in micro, it will be interpreted as marginal revenue. So when I say marginal revenue, it means additional revenue due to additional quantity. So when I say marginal product, it means additional product due to additional quantity. When it is a marginal cost, it means additional cost due to additional quantity. So total, when you differentiate that total, you get the marginal concept. और किसी भी concept को अगर आप differentiate करें किसी function को, then remember you get slope geometrically. So slope of total revenue is marginal revenue. Similarly, slope of total cost will be marginal cost. So by differentiating total cost, you get marginal cost. So MR minus MC equal to 0, which means marginal revenue must be equal to marginal cost. This is your first condition for profit maximization. So profit of firm will get maximized when firm produces that much output where its own profit get maximized, and it must produce that much quantity where MR is equal to MC. So marginal revenue must be equal to marginal cost. So first differentiation equal to 0 and second differentiation must be negative. तो जब हमने first time differentiate किया तो उसका slope आया. So slope of TR is MR, slope of TC is MC. So when you differentiate second time, you will get slope of MR and slope of MC. But that second differentiation, must be negative. Now ये complete term negative हो सकता है when this negative value is higher than the positive value, which means slope of marginal cost must be greater as compared to slope of marginal revenue. That is sufficient condition. So profit of firm get maximized where MR equal to MC, that is first condition, and second, slope of MC is greater than slope of MR. Now in simple words it is known as MC cut MR from below. वो भी किसी बुक के अंदर लिखा हुआ मिलेगा, but technically it is slope of MC greater than slope of MR. So follow this first technical note and always remember it. Whenever we want to maximize profit in any market, perfect competition or oligopoly or monopolistic, the profit will get maximized when firm produces that much output where
marginal revenue is equal to marginal cost. Now you can say sir ये तो mathematical equation हो गया. What is the reason behind it? Economic or intuitive reason? Reasoning is very easy. Suppose a firm want to produce a specific quantity, 1 unit. When firm will produce that quantity, it will add to its cost. So one additional unit will be produced, then it will be adding something to your cost. Addition to cost is called as marginal cost, and when that unit will be sold in market, it will add to revenue. Addition to revenue will be interpreted as marginal revenue. So if marginal revenue is greater than marginal cost, what does it mean? अगर marginal revenue marginal cost से ज़्यादा है, इसका मतलब है by producing that 1 unit you will add more to revenue and less to cost. By producing this unit, firm will add more to revenue and less to cost. But if you are adding more to revenue and less to cost, that means you are adding to your profit, so that producing that unit is profitable. So firm will produce that unit, and in fact quantity will increase. That means firm will continue to produce more so long as MR is greater than MC. But if marginal revenue is less and marginal cost is more, that means when you produce this unit, it will add more to cost and less to revenue. So it is unprofitable to produce that unit. Therefore quantity will reduce. So this quantity will continue to change so that MR becomes equal to MC. In that way it is equilibrium condition. So a firm will always be in equilibrium when it will produce that much output where marginal revenue is equal to marginal cost. Clear? So just remember that part. So that we will explain when we will be elaborating theoretically. So technical note I am providing just to give you that core concept in the micro. Core means it must be consistent with your mathematical derivation as well. But examination के अंदर ये कहीं लिखना नहीं है इस फॉर्म में, आपको सिर्फ ये लिखना है MR equal to MC will be the profit maximizing condition and slope of MC must be greater than slope of MR. So just this is your first basic note, just copy it, and then on second page write down the second basic note. Basic note number 2 or technical note number 2. Again write down the equation for profit. So profit is difference of revenue and cost. Revenue and cost. And revenue is nothing but price into quantity minus cost. When you calculate total revenue, you multiply price with quantity. When we will find average revenue, that is per unit, then we will divide total revenue with quantity. But total revenue is price into quantity. So when you divide it with quantity, this quantity will cancel out and only price will remain, which means price is always equal to average revenue. Price is always equal to average revenue. So in place of price, you can write average revenue, and it is always in any market. So average revenue into quantity is total revenue. Similarly, average cost into quantity will give you total cost. Average is for per unit. If you multiply it with the quantity, you get the total. So AR into Q is TR and AC into Q is TC. So if you take that quantity common, then in bracket it is AR minus AC. Profit को पाई के symbol से denote किया. So profit is quantity into AR minus AC. Now how we will get this quantity? This quantity is output. So how to get this quantity? You will get this quantity when you equate MR with MC. So when we equate marginal revenue with marginal cost, we get profit maximizing quantity. So by equating MR with MC, we get this Q.
but the term in bracket can be positive, it can be negative, or it can be 0. So there are three possibilities. Number 1, if average revenue is equal to average cost. So we will say if AR is equal to AC, then this number is 0. So profit is 0. So there is no profit, no loss. No profit, no loss is referred as break even point. But even when firms break even, firm is said to be earning normal profit. Now what is the concept of normal profit? Normal profit is in fact included in cost. वो cost में included है. So if you are covering the cost only, then you are earning only the normal profit. Just example. To produce any commodity, firm will be using say labor, land, capital, entrepreneur. तो factor of production को जो pay कर रहे हैं वो हमारा cost है. Labor will be paid wages, suppose 50. Land get rent, capital get interest, entrepreneur get rate of return on the capital. So entrepreneur is basically getting this return, but that return is the normal profit. So if you calculate the cost, then you will say cost is 200. If revenue of firm is also 200, then technically the profit is 0. If revenue is equal to cost, you will say, then profit is 0. But even when that profit is 0, this 50 profit is basically the normal profit. This is the normal rate of return that entrepreneurs must get, because entrepreneur is investing that capital, entrepreneur is taking that risk. So entrepreneur, what should be the normal rate of return? So that normal rate of return is part of cost. अब अगर revenue 250 हो, then who will keep that extra revenue? Obviously labor was paid wages, land owner rent ले गया, capital you are giving interest. So who will be keeping that extra? That extra will be kept by the entrepreneur, the person who is organizing the production. So that profit or that extra is something in addition to the normal. So that will be called as supernormal profit. So if average revenue is greater than average cost, then this number will be positive and it is called supernormal profit. So no issues with the first and second part. If AR equal to AC, there will be no profit, no loss. If AR greater than AC, there will be excess profit or supernormal profit. The third is critical, and it is when AR is less, AC is more. So when AR is less, AC is more, this number will be negative. Negative profit means loss. Now question is, if firms are making loss, then what will be their behavior? What they will do, whether they will continue to operate or whether they will shut down. So in loss, two possibilities exist. They may continue to operate, or firm may shut down. They may continue to operate or firm may shut down. But when they will continue to operate and when they will shut down, the decision depends upon, just focus here, if price is greater than average variable cost. Average variable cost I am writing. The decision to continue or decision to shut down depends upon variable. If price is more than average variable cost, then despite loss, firm will continue to operate. But when price is less than average variable cost, then firm will prefer to shut down. That means there will be no production. Because if there is no production, then there will be no variable cost. And if there will be no variable cost, then you are not losing money on the variable cost, because price is not enough to cover the variable cost. So the decision whether to continue or whether to shut down depends upon the variable cost. So I repeat, if there is loss, firm may continue to operate despite loss if price greater than ABC. Firm may shut down if price is less than the average variable cost. So what is exactly shutdown price? Shutdown price is equal to minimum of ABC. ABC is not a constant number, वो U shape में रहेगा.
तो कौन सा पॉइंट शटडाउन प्राइस होगा? दैट विल बी मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसे याद रखने का एक दूसरा और इजी तरीका है, फर्म विल ऑपरेट ओनली व्हेन फर्म इज हैविंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फर्म विल ऑपरेट इफ फर्म अर्न्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है, इट रिक्वायर दैट टीआर मस्ट बी मोर देन टीवीसी, and when you divide both side with quantity, what you will get? Total revenue upon quantity. उधर ऊपर देखेंगे, total revenue upon quantity is AR and AR is price, so this is price. Variable cost by quantity is average variable cost. So when P greater than average variable cost, there is operating profit, therefore firm will continue to operate. But if P is less than average variable cost, there will be operating loss. That means ऑपरेट करने पे लॉस हो रहा है, सो बेटर नॉट टू ऑपरेट, बेटर टू शट डाउन. सो इवन whether you are studying perfect competition or monopoly or monopolistic or oligopoly, in any market form you have to follow this rule. So firm will produce that much output where profit is maximized. For that purpose MR must be equal to MC. That is your first important point. And second, when you equate MR to MC, you get profit maximizing Q, but whether there will be profit or loss, that will depend upon AR and AC. And AR could be equal to AC, it could be more than AC, or it could be less than average cost. So this is your second and most important technical note. Now use these two in order to explain the market. ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि आपको वो बेसिक पहले से नहीं मालूम था मार्केट से रिलेटेड, एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद ए परफेक्ट कंपटीशन. तो जो स्टडी मटेरियल है उसमें परफेक्ट कंपटीशन के चैप्टर से है, मतलब बुक अज्यूम कर लेता है कि आपको वो कंडीशन मालूम है. तो अगर आपको नहीं भी मालूम था तो मैंने इस पॉइंट को पहले एक्सप्लेन कर दिया. सो बाय यूजिंग दीज टू फॉर्म वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म. Although if you see the importance, then oligopoly topic is more important, but there are many things which we will be relating with the perfect competition, so it is better to start with perfect competition first, and then we will move to oligopoly, then monopolistic, and then monopoly. So when we explain the perfect competition market, it is basically an imaginary market. We are simply imagining that there is a market for a product where there are large number of sellers and each seller produces identical product. That means each seller produces homogeneous product. So the first important characteristic or feature of this market is that it is characterized by लार्ज नंबर ऑफ सेलर. ठीक है, कोई भी इस लेवल पे आपसे परफेक्ट कंपटीशन के फीचर नहीं पूछ रहा. आई एम एक्सप्लेनिंग दैट बिकॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फीचर इज इंपॉर्टेंट. implication. So if there are large number of sellers, that means in a market for a product there are many sellers. So if there are many sellers and if I am talking about one particular seller, suppose seller X, तो ये सिंगल सेलर इसको फर्म कहेंगे और ये कंप्लीट मार्केट हो गया. सो इफ देर आर मेनी सेलर्स इन द मार्केट, दिस वन सेलर इज टू स्मॉल, सो देर आर यू कैन से मेनी स्मॉल सेलर्स इन द मार्केट and one firm is so small that it cannot affect the market price. So the question is, who is determining the price? Price will be determined in the market. And how market will determine the price? By market forces. Market forces means demand and supply forces. So that market price will be determined by demand and supply equality. But when we talk about firm, remember जो revenue वगैरह कर रहे हैं, we are not calculating revenue for entire market. Micro के अंदर we are studying for one unit, so we are calculating revenue for one particular firm. But one single firm do not have any control over the price.
price is already fixed in the market. Suppose I consider this price as 10. So for single firm, price of product will remain same, 10. At same price, the single firm can sell 1 unit, 2 unit, 3 unit or as much unit as it can. So when you multiply price with quantity, you get total revenue. So that will come out to be 10, 20, 30 and 40. From this total revenue, you can calculate marginal revenue. So marginal revenue is addition to total revenue. So how much is addition every time? Addition every time will be 10. What is important is that price is get equal to marginal revenue. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होना, बिकॉज प्राइस फिक्स्ड है. सो व्हेन प्राइस इज फिक्स्ड एंड इट इज फिक्स्ड बाय द मार्केट फोर्सेस, व्हेन प्राइस इज फिक्स्ड, then every time when you sell one extra unit, the addition to revenue will be equal to the price. So whatever be the price, that price will also be equal to marginal revenue. So price equal to marginal revenue hota hai, just remember that point. Under perfect competition, price is equal to marginal revenue. So for a single firm, when you draw the line, it will be horizontal, so price will remain same. Just write a few sentences that you should be remembering. ठीक है, वो अगर आप लिखोगे नहीं तो बाद में वो फिर मिस हो जाता है. मतलब बाद में अगर आप 2 महीने 6 महीने के बाद उसे नोटबुक को पढ़ रहे हैं तो इस रिलेटेड अगर आपने कुछ बेसिक की पॉइंट्स मेंशन नहीं कर रखा है तो डिफ़िकल्टी होती है. सो जस्ट राइट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फीचर. राइट डाउन. This feature that is large number of seller, this feature imply that a single firm do not have any control, a single firm do not have any control over price, do not have any control over price, which is determined by market, which is determined by market. So firm act as price taker. So firm act as price taker. Underline the word. So firms are price taker. They do not have any control over price. They have to decide only one thing. At that price, how much quantity they will produce. This is your first feature. And second is homogeneous product. होमोजेनस प्रोडक्ट, इट मीन्स जितने भी सेलर है मार्केट के अंदर, ऑल आर सेलिंग सेम गुड, सेम प्रोडक्ट. कंज्यूमर कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय ए फर्म और बी फर्म और सी फर्म. बट क्या ऐसा प्रोडक्ट रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? रियलिटी में होमोजेनस प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करते, विच मीन्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट इज बेसिकली अ मिथ. वी आर जस्ट इमेजिनिंग दैट देयर इज अ मार्केट where there are large number of seller, all sells same good, same product, then what will be their behavior? And we study perfect competition market because in reality perfect competition does not exist. In reality there is imperfection, but how much is the imperfection in the market? To compare that, you must know, you must have a reference point. So each market will deviate from the perfect competition, but how much is that deviation? So for that comparison, we must know what will be the outcome under perfect competition. So product is homogeneous, and the third point is critical, which is free entry and exit. Free entry and exit. That means in this market, new firms can enter or firms can leave. But the significance of this feature is that if average revenue is greater than average cost, suppose, तो अगर average revenue greater than average cost है, it means firms are making supernormal profit. So if the existing firm will make profit, it is expected that new firms will enter into the market. तो नए फर्म मार्केट में एंटर करेंगे. जब फर्म्स मार्केट में एंटर करते हैं तो
इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड एंड दिस प्राइस विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग. सो दिस प्राइस मतलब एवरेज रेवेन्यू दैट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, और ये डिक्रीज होता जाएगा जब तक AR और AC इक्वल नहीं हो जाते. बट sometimes AR could be less, AC could be more. In that case there will be loss for the firm, so firms will leave the market, and they will leave the market, supply curve will shift to the left, price will start rising. So important point to note is that ये price कब तक change होता रहेगा. This price will continue to change so that price which is AR becomes equal to average cost. That means in the long run under perfect competition all firms will be making only normal profit, So the significance of this free entry and exit is that in the long run firms will be making only normal profit. So just write that sentence. The significance of this feature is that in the long run all firms will be making only normal profit, although perfect competition market के other features भी हैं like perfect information है या perfect knowledge है, but these वो सारे point आप अलग से explain करेंगे, बुक के अंदर भी और फीचर एक्सप्लेन किएगा, बट these 3 features are critical जैसे आपको यूज़ करना है. क्लियर. सो यू आर नॉट गोइंग टू आंसर एनी क्वेश्चन लाइक एक्सप्लेन द फीचर्स, बट ये 3 फीचर मैंने बताया बिकॉज दिस 3 फीचर विल बी यूज्ड in order to understand the market. So now by using these we can start with a major or main topic, और फिर उस मेन टॉपिक से जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं पेपर में, I will be showing that. It is price output determination. Clear. So we are studying in fact perfect competition market. In that market we are studying price and output determination. So you will say that the price is already determined, price is fixed by the market. The firm has to decide only one thing, how much output it will produce, and firm will always produce that much output where its own profit is maximized. So profit maximization is key, and profit is difference between revenue and cost, that is total revenue and total cost. And profit get maximizing condition require that MR is also equal to MC. So there are 2 approach of price output determination. One is TR and TC approach, and the other is marginal revenue and marginal cost approach. So we will explain both the approach separately. So write down the first paragraph here. The firm is in equilibrium when the firm in market, so we are studying perfect competition market, the firm is in equilibrium when it maximizes its profit, which is defined as difference between TR and TC, difference between revenue and cost. Full stop. Given that normal rate of return is included in cost, after comma profit is above the normal rate of return, Next paragraph. Equilibrium of firm may be shown graphically
in two ways. In two ways. First, total revenue and total cost approach. Total revenue and total cost approach. And second, marginal revenue and marginal cost approach. Marginal revenue and marginal cost approach. So one by one, first we are discussing this TR and TC approach. So focus here. First, we have to explain this in graphical way. So when we calculate profit, it is difference of revenue and cost. So we have to draw revenue line, we have to draw the cost line one by one. Revenue is price into quantity, but under perfect competition, price for a firm is constant. So when price is constant, like price is constant as 10, quantity could be 1, 2 or 3. So what will be the revenue? It will be 10, 20, 30. So how you can plot that? As quantity will increase, revenue will increase, but it will always increase at the rate of 10. It means it will be a straight line. So this revenue will be a straight line. But why I am drawing it straight? It is drawn straight because price is constant. So just remember, if the market will be different, where price is not constant, then the revenue shape will be also different. Revenue curve different हो जाएगा. अगर price constant नहीं है, constant होने पे line straight बननी है. Constant नहीं होने पे the curve will be different. So you plotted that total revenue line straight, or this line you can draw steeper or flatter. The slope will depend upon price. So if price is more, it will be steeper. Remember, slope of TR is MR, but MR और price दोनों same होने हैं. And now draw total cost. After drawing that total revenue, draw the total cost. And as you know, total cost will have fixed cost as well as variable cost. Fixed costs are those costs which do not depend upon quantity, which means even when quantity will be zero, there will be some fixed cost. So just mark any arbitrary amount and show that it is fixed cost. So when quantity will be zero, even then that cost will be there. In that fixed cost you add variable costs, but variable costs are those which depend upon quantity. So as quantity will change, variable cost will change, and if quantity will be zero, then variable cost will also be zero. So you are adding variable cost into the total fixed cost. So starting from this point, just draw inverted S, but that will be total cost because you have added fixed cost into the variable cost. If you draw only variable cost, start from the origin, and that will be again the shape will be same. So it is inverted as due to law of diminishing return in production. When we will explain the production concept, then this will become clear why the shape is exactly like this. But just for the timing, draw total cost line inverted S in shape. Now the intersection of TC and TR. So when TR is equal to TC, intersection is they are equal. So the intersection of TC and TR will denote that profit is zero. So profit is zero here, and profit is zero here also. Profit is zero here also, profit is zero here also. And profit is the gap between TR and TC. So gap means vertical gap here. So if you mark this distance is in fact profit. So as quantity will increase, profit will increase. There will be a maximum gap, and then again that gap will reduce. So just mark the maximum gap. So this will be the quantity where profit is maximized. So this must be your equilibrium quantity. So this is the quantity where profit is maximized. To the left of it and to the right of it, the gap is less. So profit is maximized here. So if you want to plot profit curve, initially profit will increase, it will reach a maximum and then it will reduce. So initially it will increase, reach a maximum, and then it will decline. So profit curve is in fact inverted S in shape. If you want to draw profit curve separately, it will be drawn like this. This gap
is basically plotted here. This gap is plotted here. So this is the profit maximizing quantity, and at that quantities, because average revenue is more, total revenue is more and total cost is less, that means this gap is positive. So this is the diagram for supernormal profit. This is diagram for supernormal profit. But I have added one more point, that when profit is maximized, then MR is equal to MC. Although it is not MRMC approach, it is TRTC approach, but both condition must give you the same quantity. Marginal revenue is slope of this total revenue line. So that total revenue line is straight. So marginal revenue is slope of that line. If you want to get slope of total cost, but total cost is not straight line, it is non-linear. So if you want to find slope, you have to draw tangency at that point. Tangency बनाते because that tangency will be a straight line, और जो straight line होगी उसका slope each point पे same होना है. So you will say that the slope of that tangency will be equal to slope of that curve at that point. That is why you draw tangency. But you will find that this tangency and this TR are parallel. It means they have same slope, which means MR is equal to MC. Marginal revenue marginal cost के बराबर होगा. तो ऑब्वियसली जहाँ पे TR और TC का गैप मैक्सिमाइज है, उसी पॉइंट पे MR की वैल्यू MC के बराबर भी होगी. So this is your first diagram repainting supernormal profit. Look, this was a question in 2015. In fact, you can read this topic wise question, market structure. You will find one question 22. Under perfect competition in the short run, find out graphically without using average cost curve the condition in equilibrium of the existence of normal profit, supernormal profit and loss. Under perfect competition, so question refers to perfect competition. Find out graphically, so without using any equation and without using average cost curve. So if you are not using the average cost curve, then you can use only the total revenue and total cost approach. So we have only one option. By using TR and TC, तीन कंडीशन शो करने थे, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस. तो ये जो डायग्राम हमने बना रखा वो किसके लिए हो गया? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए. नाउ ऑब्वियसली ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब इस क्वेश्चन में ये नहीं हो कि आपने सिर्फ तीन डायग्राम ड्रॉ कर दिए और कुछ लिखा नहीं. यू हैव टू एक्सप्लेन ब्रीफली, एंड व्हेन यू एक्सप्लेन ब्रीफली देन यू आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन व्हाई यू हैव ड्रॉन दिस TR लाइन स्ट्रेट, व्हाई यू हैव ड्रॉन दिस टोटल कॉस्ट लाइन इन्वर्टेड एस इन शेप. सो what you have to write, I'm just dictating. So briefly जो points आपको आंसर में लिखने हैं, just write it down. The total revenue curve is straight line. The total revenue curve is straight line through origin. Total revenue curve is straight line through origin, showing that price is constant. Showing that price is constant at all levels of output. Price is constant at all levels of output. Full stop. The firm is price taker. The firm is price taker, and it can sell any amount of output. It can sell any amount of output at current market price. At current market price. Full stop. The slope of total revenue is marginal revenue and it is constant. The slope of total revenue is marginal revenue and it is constant. And it is equal to existing price. It is equal to existing price. मतलब परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस और MR और ऑब्वियसली AR ये इक्वल होते हैं. नेक्स्ट पे आप, द टोटल कॉस्ट कर्व इज इन्वर्टेड एस इन शेप. द टोटल कॉस्ट कर्व इज इन्वर्टेड एस इन शेप ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न.
due to law of diminishing return. Underline that. The firm maximizes profit when the firm maximizes profit when distance between the firm maximizes profit when distance between total revenue and total cost is maximized. Distance between total revenue and total cost is maximized. At any other level of output, profit is not maximized. At any other level of output, profit is not maximized. Full stop. Since difference between TR and TC is positive, difference between TR and TC is positive, so firm is earning supernormal profit. Firm is earning supernormal profit. Firm is earning supernormal profit. So this first diagram is representing supernormal profit. So you have to show three conditions, one for supernormal, other for loss, and third for normal profit. So now for the loss, next paragraph. However, in short run, there could be loss for competitive firm. There could be loss for competitive firm when total cost is greater than total revenue. Total cost is greater than total revenue. But you know that in the loss situation there are two possibilities. Firm may shut down or firm may continue to operate. So firm will operate when revenue is greater than variable cost. So when you draw the diagram for loss, you have to draw total revenue, total cost as well as variable cost also, because only then you can make a decision whether firm is producing any quantity or whether there is shutdown. But continue this. But firm will continue to operate despite loss. Firm may continue to operate despite loss if total revenue is greater than total variable cost. If total revenue is greater than total variable cost, because in that situation firm will earn operating profit. In that situation firm will earn operating profit. Firm will earn operating profit. So if you are showing it graphically now, the situation, draw the revenue line straight. This TC must be higher than TR. So when you draw that total cost line, it must be above at all level. TC must be higher. So the gap between TR and TC is profit, but now TC is more. So that means there is loss. So loss has to be minimized. So wherever you find the minimum gap, just mark that. So this will be the quantity where loss is minimized. But despite loss, firm is operating, and for that purpose they must have operating profit. So your variable cost must be lower than the revenue. So draw for variable, but variable will start from origin. Remember, when you draw the total cost line, it is this. When you draw variable, it will be parallel to this, because the gap between these two will be fixed cost. So draw this also as inverted S and keep it parallel to the total cost line. But we are concerned about this quantity. This gap AB will be the amount of loss, but this gap, which is B to C, will be measuring operating profit. So despite loss, firm is producing quantity because firm is having operating profit.
firm is having operating profit. So this second diagram is a repainting loss. So in the case of supernormal profit, the total cost line was below. For loss, it is above. So what will be the normal profit? For normal profit, it must be just tangent. So you can show that third case. Third is for normal profit. TR must be equal to TC now. The total cost must be just tangent. Normal profit का कोई area नहीं होगा because that profit is included in cost. Clear? So this tangency point is basically the profit maximizing quantity. Diagram number 3. Clear? So these type of question you can say this is direct question. ये और एक जो क्वेश्चन आप ऑप्शन में ये देख रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड, ये इकोनॉमिक सर्विस का इनफैक्ट क्वेश्चन था. सो इट इज ऑलवेज हेल्पफुल इफ यू सी, if you are preparing for economic service, see the question of optional. If you are preparing for optional, see the question of economic service as well. ठीक है, वहाँ पे वो कंपल्सरी क्वेश्चन 5 मार्क्स के वेटेज में था, यहाँ पे आई थिंक ये 10 मार्क्स के वेटेज में था, बट क्वेश्चन है सेम. एक एप्लीकेशन बेस से बता रहा हूँ. इन केस सपोज इन फ्यूचर द सेम क्वेश्चन कम्स and instead of perfect competition it says monopoly, the remaining question is same. So if it is for monopoly, then the diagram of revenue will be different. So when we will be studying monopoly, obviously we will get to know what will be the shape of total revenue line. In perfect competition, revenue was straight because price is constant, but in monopoly firms are not price taker, so the revenue line will be different. So जब monopoly करेंगे, then we will be covering the same question. Now one more question that we can answer, or which was basically on perfect competition, was the question of 2019. This question number 4. Under competition, the cost function is given as y square plus 1, where y is output. Derive the inverse supply curve and show how supply curve looks like. So this was not at all a numerical question. It was basically a conceptual question. And the concept used here is that marginal cost curve is the supply curve of firm under perfect competition. So if you know that concept, you can answer it. So do one more topic for this class, that why marginal cost curve is the supply curve, and then we can answer this question. So why marginal cost curve is supply curve. And on marginal cost curve is a supply curve of competitive firm in short run. Short run means it is that period where some factors are fixed. And short run also means that entry and exit is not allowed. Entry and exit is a feature of long run. In short run, you can't leave, or name firms cannot enter. So there can be profit or there can be loss. But if we are referring to normal long run, then in the long run, due to free entry and exit, there will be only normal profit. So why marginal cost curve is the supply curve? So if we are explaining supply curve, it means supply curve will explain relationship between what? Price and quantity supplied. That means at price P1, if quantity supplied is Q1, you get 1 point. At price P2, quantity supplied is Q2, you get second point, and by joining all those points, we can derive the supply curve. Now draw one diagram here for market, second diagram for firm, and third also for firm. Intersection of demand curve and supply curve determine price.
So price is say P3. Mark this price P3 and draw horizontal line. Then draw average cost curve, and below that draw average variable cost curve, and the gap between these two will reduce because that gap is average fixed cost. And marginal cost always pass through the minimum point of these two, will always pass through the minimum point of these two. So first determine the profit maximizing condition. So you know that profit maximizing condition, profit will get maximized where MR is equal to MC. So MR equal to MC का point जहाँ intersection आ रहा है, first of all mark that point. So this will be the quantity. So if price is P3, quantity produces let us say Q3. So if you multiply price with quantity, you will get the area of revenue. So this rectangle is the area of revenue. From that revenue, you have to subtract cost. For cost, for this quantity, average cost is this. So if you multiply this average cost with quantity, you get this area. So that will be the area of profit. तो अगर आप मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच से कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं तो वो एरिया प्रॉफिट का शो करना, बट यहाँ पे एरिया को मार्क करने की जरूरत नहीं है. फॉर दिस क्वांटिटी प्राइस इज मोर, एवरेज कॉस्ट इज लेस. So firm is making supernormal profit. So firm will supply quantity Q3 at price P3. So at price P3, quantity supplied will be Q3. So I just marked one point here. इस point को यहाँ plot कर दिया. Now if price is lower, suppose it is P2 और deliberately ये price AC और ABC के बीच में ले रहा है. I have to prove a point here, but you will say that price is determined by market. So correct, price is determined by the market. So if supply curve passes through this point, then price will be P2. So this will be MR then. Price is equal to marginal revenue. So now again apply profit maximizing condition. MR equal to MC will be satisfied here now. So MR equal to MC is satisfied here. So this will be the quantity, that is Q2. Now at this quantity you will say that price is less, average cost is more, so there is loss. Price is less, average cost is more, so there is loss. But despite loss, firm will operate because price is more and average variable cost is less. So when price is greater than average variable cost, firm will operate despite loss because firm is having operating profit. So firm will supply quantity Q2 at price P2. So you plotted this point here, clear? But suppose if price reduces further and it is reduces further from P2 to P1, and that P1 is exactly equal to the minimum of ABC. So at that price again MC equal to MR, you can say at this. Now at that quantity price is equal to ABC. So now there is no operating profit also. So if there is no operating profit, now firm is indifferent. Firm may operate, firm may not operate. But certainly if price is lower than P1, then firm will not operate. Then supply will be zero. मतलब इस P1 प्राइस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो हो गया. If price reduces further, then there will be operating loss. So the production will be zero. So at any price lower than P1, मतलब P1 के नीचे, quantity supplied will be zero, which means it will be coinciding with vertical axis. But at price P1, firm may supply quantity Q1, may supply means this, may not supply means this. So when you join these points, first, second, third, when you join these points, you get in fact marginal cost curve. So the marginal cost curve is supply curve, but it is not the entire marginal cost curve. It is only that part of MC which is above the average variable cost curve. So marginal cost curve is supply curve, but not the complete marginal cost curve.
It is only that part of MC which is great above the marginal variable cost, which is above the average variable cost. So this was that means this concept was expected to be applied in that question. So you will be answering that question, but write down the basic one. ठीक है, तो ये जब कभी आप कोई सप्लाई का वगैरह माइक्रो वगैरह में पढ़ते हैं और सप्लाई का वगैरह हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो इस लाइन का मतलब होता है कि एट एनी प्राइस लोअर देन दिस देयर विल बी नो सप्लाई. सो दिस मस्ट बी द शट डाउन प्राइस जहाँ से वो बिगिन हो रहा है. और शट डाउन प्राइस फॉर डिफरेंट फर्म कैन बी डिफरेंट. राइट डन. marginal cost curve is a supply curve of firm in short run, a supply curve of firm in short run under perfect competition, a supply curve of firm in short run under perfect competition, but it is not entire marginal cost curve. It is not entire marginal cost curve. It is not entire marginal cost curve. Full stop. In fact, it is only that part of marginal cost curve. It is only that part of marginal cost curve. That part of marginal cost curve which lies above average variable cost. Which lies above average variable cost. Underline that. Which lies above average variable cost curve. This is because when marginal cost is less than AVC, that means below that, this area, बस सप्लाई कर्व में ये एरिया इंक्लूड नहीं हो रहा है. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सप्लाई कर्व विच इज लोअर देन द AVC. This is because when marginal cost is less than AVC, then equating price with MC implies that price is less than AVC, imply that price is less than average variable cost, but any price lower than average variable cost means there is operating loss. Price is less than AVC. This means that there will be operating loss. There will be operating loss. As a result, firm will shut down, and there will be no production. Therefore, only that part of marginal cost curve which is above ABC is supply curve of firm. Clear? Now the question after 2019, उसमें वो पॉइंट एक्सप्लेन करना है एंड देन यू हैव टू आंसर एज पर द इक्वेशन. अंडर कॉम्पिटिशन द कॉस्ट फंक्शन इज गिवन एज कॉस्ट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन, वेयर वाई इज आउटपुट, मतलब आउटपुट को क्यू की जगह वाई से शो कर रहे हैं बस. डिराइव द इनवर्स सप्लाई कर्व एंड शो हाउ सप्लाई कर्व लुक्स लाइक. सो द क्वेश्चन सेज टोटल कॉस्ट, ये कॉस्ट इक्वेशन गिवन है, वाई स्क्वायर प्लस वन, वाई आउटपुट है, वन कॉन्स्टेंट नंबर हो गया. तो कंसेप्ट से अकॉर्डिंगली यू कैन नो that part of cost which does not depend upon output is fixed cost. So one is fixed cost and y square is variable cost. So from that total cost you can calculate marginal cost. Marginal cost के लिए total cost को differentiate करते हैं. तो बेसिक डिफ्रेंसिएशन सिर्फ अप्लाई हो रहा है. वाई स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, पावर से मल्टीप्लाई कर दिया और पावर से वन सब्ट्रैक्ट कर लिया. तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y, वन इज कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन 0, सो मार्जिनल कॉस्ट इज 2y
and supply curve means firm will supply that much output where P equal to MC. तो प्राइस को MC से इक्वेट कर देंगे और MC की वैल्यू 2y होगी. दैट मीन्स अगर आप कोई कॉलम बनाते हैं प्राइस और आउटपुट का, सो इफ आउटपुट विल बी 1 देन प्राइस विल बी 2, इफ आउटपुट इज 2 देन प्राइस विल बी 4, इफ आउटपुट इज 3 प्राइस विल बी 6. सो हाउ टू प्लॉट? This is output, this is price. So when output is 1, price will be 2. When output is 2, price will be 4. So that means it will always increase at a certain rate or at a fixed rate. So it will be a straight line. This will be supply curve which is coinciding with the marginal cost curve. बट आपने लिखा है कि प्राइस ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होना चाहिए. तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू यहाँ क्या आएगी? अगर ये वाई स्क्वायर ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है टोटल, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट. सो दैट विल बी वाई स्क्वायर अपॉन वाई, दैट मीन्स ओनली वाई. मतलब वाई आउटपुट 1 होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 1 होगा. तो ये लाइन, इस लाइन का स्लोप इनफैक्ट 2 है. अगर आप वेरिएबल कॉस्ट ड्रॉ भी करेंगे तो लाइन इसके नीचे बन जाएगी. सो नो नीड टू शो इट. सो दिस इज योर सप्लाई कर्व. एंड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ इनवर्स सप्लाई कर्व देयर? देखो, सप्लाई हो या डिमांड हो, इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट क्वांटिटी इक्वल टू 90 माइनस 2p, तो डिमांड के टर्म में इसका मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. दिस इज नोन एज डायरेक्ट डिमांड कर्व or direct demand function. Same thing could be written as 2p equal to 90 minus q. So price is equal to 45 minus q by 2. So when you say price as a function of quantity, it is inverse. So q as a function of price is direct, p as a function of q is inverse. So p as a function of output, ये already inverse लिखा हुआ है, no need to just for confuse करने के लिए कि इनवर्स सप्लाई कर्व को डिफरेंट होता होगा. प्राइस एज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट होता है, p इक्वल टू 2y. अगर इसका डायरेक्ट लिखा होता तो क्या लिखना था? अगर इसका डायरेक्ट लिखना होगा तो इसी को आप लिख देंगे y इज इक्वल टू p बाई 2. दैट विल बी डायरेक्ट. ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन से आर सम एप्लीकेशन, सम कंसेप्ट ऑफ मस्ट बी मार्जिनल कॉस्ट कर्व, सप्लाई कर्व. You must know from total cost how to calculate marginal cost and then just plot it graphically. But these are that question, easy question. Out of 10 अगर effectively लिखेंगे, presentation better है, तो 7-8 तक का भी स्कोर आप में स्कोर कर सकते हो. Clear? So this was question of 2019. ये डायग्राम आप जब कभी ड्रॉ करते हैं, मतलब from today's class we just know that the profit maximizing condition is MR equal to MC, and we can identify profit from the two approach. One is total revenue total cost approach, other is marginal revenue marginal cost approach. So just draw a separate diagram in note. If you are using MR and MC, ठीक है, we have drawn diagram for that TR and TC. If you are drawing it with MR and MC approach, then you have to draw two diagrams, one for the market, other for the firm, because price will be decided by the market, and then you can draw marginal revenue equal to price. Now if you want to show profit, then draw average cost curve below. If you want to show loss, draw average cost curve above. But in the loss you have to show that firm is making profit. तो लॉस में एवरेज कॉस्ट अबव बनेगा और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल बी लोअर. एंड इन द केस ऑफ जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट it will be only tangent. So I'm just using for one case. Suppose it is for super normal profit. Just your average cost passing to the minimum of this is marginal cost, and always apply the condition MR equal to MC. So MR equal to MC, equality में जहाँ intersection आ रहा है, that will be the quantity. So
price multiplied by quantity, this will be the revenue area. In from that revenue we subtract cost. टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी करते हैं. सो यू नो दिस क्वांटिटी, फॉर दैट क्वांटिटी एवरेज कॉस्ट इज दिस डिस्टेंस. व्हेन यू मल्टीप्लाई यू गेट दिस एरिया. सो रेवेन्यू एरिया इज दिस लार्जर रेक्टेंगल, cost area is this smaller rectangle, the difference of these two will be profit. So this is diagram for supernormal profit. ये supernormal profit के लिए diagram. तो marginal cost marginal revenue is basically an alternate approach. इस तरीके के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, मतलब वो जैसे TRTC अप्रोच वहाँ पे एक कंसेप्ट इन्वॉल्व था. क्वेश्चन ने कह दिया विदाउट यूजिंग एवरेज, हेयर यू आर यूजिंग एवरेज, एवरेज कॉस्ट ड्रॉ कर रखा है. उस क्वेश्चन में कहा गया था विदाउट यूजिंग एवरेज. सो विदाउट यूजिंग एवरेज you have only one approach, that is TR and TC approach. So this is for supernormal profit. If you want to show it for loss, just draw a final diagram for loss. Remember, there will be loss when price is less than average cost, but to operate price must be greater than average variable cost. So show this condition. Demand supply intersection is determining the price. Your average cost must be greater than price, so average cost is above. Average variable cost must be lower than price, so lower than price, and the gap will be declining. और इन दोनों के मिनिमम पॉइंट से you have to draw the MC line. But then to maximize profit you have to equate MR with MC. ठीक है, वो प्रिंसिपल अप्लाई करना है. इसे मार्जिनलिस्टिक प्रिंसिपल कहते हैं. मोस्टली जितने भी आप कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें मार्जिनलिस्टिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. जहाँ मार्जिनल इक्वेट हो रहे हैं वहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया या लॉस मिनिमाइज हो गया. सो देयर इंटरसेक्शन इज हियर. दिस विल बी द क्वांटिटी. सो योर रेवेन्यू एरिया इज दिस रेक्टेंगल, बट कॉस्ट विल बी नाउ मोर. So revenue is less than cost. So this is repainting loss. So this will be the area of loss. And what will be the area of operating profit? Operating profit will be price is this, variable cost is lower. So if you mark this rectangle shows operating profit. So if required in any question you can show it graphically as well. So there are two approaches, one was MR and MC and the other one is TR and TC. So that TR and TC approach has been asked. So based upon this class you answered in fact two questions in the market structure topic. So just make a habit of writing those answers. Question matlab just take a spiral separate. Write down this question, mention that year and below just give yourself two side maximum. ठीक है, क्योंकि वहाँ स्पेस कंस्ट्रेंट होते हैं और उस दो साइड में लिखना. मतलब कंपल्सरी क्वेश्चन में यू हैव टू राइट इनफैक्ट 1.5 मैक्सिमम. मतलब उससे ज़्यादा लिखेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा. सो यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट अराउंड 150 वर्ड्स. सो 150 वर्ड्स मीन्स 1 पेज एंड नेक्स्ट पेज हाफ पेज. बट यहाँ पे भी स्पेस कंस्ट्रेंट को ज़्यादा बॉदर नहीं करे, बट जस्ट गिव टू साइड्स. और सेपरेट स्पाइरल में दो क्वेश्चन, जैसे ये 2019 का क्वेश्चन किया 4 और क्वेश्चन नंबर 22 आई थिंक था इन 2015. इन दोनों क्वेश्चन को आप सेपरेट स्पाइरल में मेंटेन कीजिए. जस्ट मेंटेन हैबिट. इन एवरी क्लास आई विल बी शोइंग दैट बेस्ड अपॉन दिस क्लास यू कैन आंसर दिस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. आई थिंक 60, 70, 80% क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर वाले डे टू डे जो क्लास चल रही है उसके अंदर ही सॉल्व होते जाएंगे. जो रह गए हैं उसको आप बस यहाँ पे मार्क करके रख लो. अगर उनमें से कुछ टेस्ट सीरीज़ के मॉडल आंसर में मिल जाएंगे, स्टिल कुछ रह जाता है यू कैन आस्क फ्रॉम मी कि इसमें क्वेश्चन में क्या करना है. सो इफ़ यू मेक दैट हैबिट ऑफ राइटिंग 2 आंसर एवरी डे इन अ मंथ, अराउंड 60 क्वेश्चन लिख लिए. 3 मंथ 4 मंथ के पीरियड में अराउंड आपने 200
क्वेश्चन लिखने, दैट विल बी गिविंग यू अ गुड प्रैक्टिस। और टेस्ट लिखने का जो फियर होता है वो नहीं रहता है, अदरवाइज स्टूडेंट्स फियर फ्रॉम टेस्ट कि टेस्ट लिखना है तो वो पूरे 28-19 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, तो और लिखने की अगर आदत नहीं है, आंसर के फॉर्मेट में लिखने की आदत नहीं है, देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। So I think that is enough for this class number 1. In the subsequent class we will be continuing with this perfect competition and then moving to the oligopoly. But in the perfect competition one more topic is there, which is long run industry supply curve. So what will be the long run industry supply curve? We will explain that and then we will start with the oligopoly. So that main topic is in this section is in fact oligopoly. This will take I think 4 to 5 lectures, and then monopolistic will be taking, let us say, 2 lectures. So in totality market structure will be taking around 10 to 11, और जहाँ जहाँ numerical involved है I will be giving you some illustration, even if not asked, मतलब पेपर में अगर नहीं भी आए हुए तो एक दो एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। और स्टिल अगर कुछ स्टूडेंट को बेसिक्स में डाउट है या न्यूमेरिकल वाले, आई हैव अपलोडेड अ फ्यू सप्लीमेंट्री क्लासेस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। मेनली जब लास्ट ईयर का क्वेश्चन कोऑर्डिनेट मॉडल का न्यूमेरिकल आया, वो पहले भी आ रहे थे बट थोड़ी डिफ़िकल्टी थी, प्लस मैक्रो के क्वेश्चन अभी तक आते नहीं थे न्यूमेरिकल। 2019 में भी आ गया एक और 2020 में भी है। सो आई हैव अपलोडेड सम lectures of micro and macro that will be supplementary, that is not part of this regular, but that will help if you are interested in doing some numerical question. ठीक है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इनफैक्ट जो कंटेंट है ISLM का मैक्रो के अंदर वो है, और माइक्रो में मोनोपोली एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सपोज यू आर प्रिपेयरिंग ऑलवेज फॉर कोऑर्डिनेट मॉडल, इफ द क्वेश्चन इज ऑन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इफ द क्वेश्चन इज ऑन कैलकुलेटिंग डेड वेट लॉस, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आएगा, बट इन केस अगर वो आ जाता है देन यू शुड बी नोइंग इट। ठीक है, तो जहाँ इतना एफर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा एफर्ट और कर लेते हैं, गिवन दी क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर्स। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब उस कंटेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ, यू शुड बी प्रिपेयर्ड वेल। तो यू कैन सी दोज क्वेश्चंस, दोज लेक्चर्स। और उसमें निकोल्सन एंड स्नाइडर की जो बुक है उसके एक क्वेश्चन तो ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन मार्केट स्ट्रक्चर में बर्टन मॉडल का ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन वहाँ पे निकोल्सन स्नाइडर में चैप्टर के बैक के एक्सरसाइज में गिवन है। वहाँ पे C1 ग्रेटर देन C2 ना लिख करके वो कॉस्ट की वैल्यू गिवन है कि C1 10 है और C2 8 है, बट इट इज सेम। सो सिंस वन क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द अदर क्वेश्चन। तो निकोल्सन एंड स्नाइडर, ऑल्दो कोट्सानिस आपकी कोर बुक रहेगी, कोट्सानिस ही आपको रेफर करना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू आर आंसरिंग फ्रॉम कोट्सानिस, बट फॉर फ्यू क्वेश्चंस लाइक दिस निकोल्सन स्नाइडर, तो सप्लीमेंट करने के लिए, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, दैट मीन्स इवन द न्यू वन, देन यू शुड बी रीडिंग द न्यू टॉपिक एज वेल। क्लियर? बट बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना है कि सारे नए क्वेश्चन ही आते हैं, ये पैटर्न होता है, ये ट्रेंड होता है, ऐसी बात नहीं है। द नॉर्मल ट्रेंड वो आपको ओवरऑल क्वेश्चन, किसी भी पेज का क्वेश्चन अगर आप देखते हो, लाइक फॉर एग्जांपल दिस, यू विल नॉट फाइंड इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो वो 4-5 ईयर पे किसी एक साल में 1 और 2 न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो 20 में आ गया तो अब नेक्स्ट सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली 4-5 साल बाद ही मिलना चाहिए। बट स्टिल अगर वो रिपीट होता है देन यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। क्लियर? सो विल कंटिन्यू विद दिस in lecture number 2. Thank you.